Good afternoon and live from Multan Cricket Stadium once again on day 6, match number 11. We're all set and we're all excited about the first encounter, KP versus Sindh. As we look at this beautiful strip out there, which has got lots and lots of runs. We've been enjoying some good batting performances, individual performances, team performances. This also an all-important game after last night's defeat. Sindh has slipped down to number 4 from number 2. And KP are looking good in the captaincy of Mohammad Rizwan. They've won 2 games out of 3. Sindh have won 1 game in the 3 matches that they've played. This is a very strong squad there. Lots of players who played for Pakistan. Let's have a look at the 2 teams. I've got Azhar Ali to my right. 1 change in each. Looking strong, KP. Yeah, they're a very, very good side. There is experience and combination of experience and youngsters. So there were so many good players in that team, and there's 1 change. Zohaib Khan comes in, and there's another spin option for KP there, and their top order looked very nice and very strong with lots of experience of likes of Muhammad Hafiz and Shoaib Malik, and obviously there is excitement of Fakhar Zaman and Muhammad Rizwan right there. And Sindh have 1 change as well, with Muhammad Hasnan goes out for Hassan Khan. So there's another spin option for Sindh. So both teams are looking to use their spinners on this track, and they probably feel that they might be helpful for the spinners. The 2 umpires walking out. At the time of the toss, Sarfaraz was of the opinion that he was interested in putting up a score today, so he's pretty much happy in losing the toss and being asked to bat first. KP, on the other hand, have got that momentum going. They wouldn't like to experiment in terms of too many changes in the side, but yes, they don't mind bowling first and see how it goes when they come out to chase. The 2 batsmen, we saw some real good fireworks from Azam Khan at number 3. Sharjeel got a very good match in the 2nd game for Sindh, 77. Yesterday couldn't be amongst runs. Bit of a struggle for Khurram. He almost batted 20 overs, but only could manage 60 odd runs. He faced 52 balls, that's almost 10 overs. Yes, he had a score under his belt, but the problem was once you're chasing 200 and once you're chasing almost 10 and over from the start, you need to have a strike rate a lot higher than what he had yesterday or last night rather. So he needs to obviously start fresh again, both of these batsmen. The challenge they might face batting first will be 4 or 5 overs where the ball doesn't really come onto the bat. So that's the challenge they will face. But wickets in hand is important. Sharjeel Khan, a very, very talented player. He can change the game around on his own. Khurram Manzoor would like to build on what he had done yesterday. I think somewhere, I wouldn't say in his defense, but he was playing second field. When Azam was hitting, he didn't have to go all out. Then it was Anwar Ali, so he was again being a spectator. But when time came for him to go in top gear, I think it's a little bit too late. Known to be very dangerous against left-handers. At the moment, he's got Khurram on strike, but he will keep Sharjeel in check. Mohammad Hafiz, all the experience that he has, he'll be starting from the far end. Yes, mainly it's because of Sharjeel Khan, Rizwan opt to go with Muhammad Hafiz. And let's see what tactics Khurram Manzoor. He'll be the one probably going after Hafiz. All set. Match 11 to start. KP versus Sindh. KP won the toss, decided to bowl first, and here we go. Kept low on that occasion. There's a deep mid-wicket in place. That's in your picture now. And the other man who's patrolling the boundary is long off now for Sharjeel. This is going to be a very nice battle because he's renowned as a left-hander killer. And boy, KP would like Sharjeel's wicket right now.
Deep square leg in place for Sharjeel and a long off. Yesterday we saw a bit of a half-hearted attempt from Sharjeel against quick bowling, and that's what ended up as an edge to the wicket-keeper. Doesn't really rely on big foot movement. He's more of a hand-eye coordination player, more on relying on power and reach. Yes, he likes to cut and pull, and he likes the ball coming onto the bat. It's all about the natural instinct. You can't keep batsmen like Sharjeel quiet for a long time. They want to hit the ball big. That's how they go. If they try to defend too much, they will not be within their zone. They'll just get spaced out then. Quick single taken. Having said that, when you talk about players and their natural instincts, do you agree with labeling players that this is a shortest format player or this is a long format player, or you believe that they should be given that opportunity? Would you like to see someone like Sharjeel or Azam Khan in a longer format of the game? If someone like David Warner, who goes around a ball in test matches, sometimes crosses that. Down on one knee, and he'll earn the first boundary of the day. Khurram Manzoor, slightly short, quickly got into position there. Khurram. Yeah, nice slog sweep over the top of square leg. He will be probably looking to attack Mohammad Hafiz. This ball is coming into him. He picked the length and didn't try to keep it down, which was the key on this stroke. This time giving the charge. It's down the wicket. A couple of bounces and 4. Nice bit of tactics by Khurram Manzoor. He saw the field change by Mohammad Hafiz. He got the wide mid-on rather than the straighter mid-on, and he took that option, going down the track, over the top. Nice bit of batting by Khurram. It's a good boy. He came down the wicket but kept covering the line of the ball. Once again, gives it a full swing of the bat. 3 boundaries on 3 deliveries. That's a good start for Sindh. They move and race to 14 for none after the first over. Talking about the formats that are available in cricket. You've got the test matches, you've got the 50-over version, you've got the shortest format, and now you feel that you've got tailor-made cricketers for each format. You've got the ones who are fittest for the shortest format, and then you have people who have more endurance, who can bat and play through sessions and keep their calm. We'll talk about this as Shaheen Shah Afridi is in operation. Yeah, of course, there's always a chance of, especially the guys who are specialists at the shorter formats, they find it hard sometimes to play the longer format. But there are players like David Warner and the others who adapted their game according to the test format. So it all depends. You don't need to label them straight away, but player has a responsibility himself to adapt to different formats of the game. Quite get hold of it, just a single. But having said that, the whole scenario is such around the world that even at club level or your Sunday cricket level, it's all about T20s. Your stars are T20s. You'd like to know those big hits. So
So you groomed at a very grassroots level of for the shortest format. It just attracts more attention to the youngsters. I think most of the cricketers believe that if you are to be a good white ball player, you need to play some first-class cricket as well, because there are basics you need to work on, even in T20 as well. You know, there are bowlers who bowl at from 150k. Nicely bowled. That ball didn't deserve a boundary. It was a good Yorker, but it was slightly on the legs, which helped Khurram work it around nicely. Shaheen Shah likes to bowl full and try to swing the ball, but that was a bit too straight, and Khurram made full use of it. It'll be interesting battle between Shaheen and Sindh's batsman. Shaheen likes to take early wickets, likes to bowl really full. Oh, he's gone right through. That's what he wanted to bowl. He's cleaned it up completely. Khurram had nothing to do with that. He was trying to cover the line. It was just a little too quick and perfectly placed Yorker. What a delivery. Yes, outstanding, because he got hit from the same length, but line wasn't right. But this time around, there was a lot. Started off a lot from off stump, but Khurram played all across it on the off stump, flying. 17 of 6 deliveries, Khurram Manzoor, and it's 19 for 1. Azam Khan coming at number 3. He played really, really nicely, impressed a lot of people last night, the way he batted. It's not long before he has to come back in again and face Shaheen Shah. What a ball that was. Started to come back in and just straighten at the end. That's Khurram paid the price of playing across the line for such a fuller delivery. He was so aimed at the off stump, didn't even disturb the bails on the leg side. Just so quick. Azam, extremely impressive yesterday at number 3. He was chasing 200 plus last night. Now does he approach here? Power play in process. This will be a tougher challenge this time around, because last night you could see the ball was skidding onto the bat a lot nicer. This time around, a fresh pitch, and Shaheen is always, he got his tail up. You could see at least 5 out of 6 balls would be nice and full, looking to hit the pad or hit the stumps. Wide. Last night they had 200 plus to chase, rightly so. When Sharjeel got out from no score, they sent Azam. Right call. Would you have done the same what Sarfaraz has done now? To still insist with Azam Khan at number 3 when they're batting first? Well, in T20 cricket, you want your in-form batsman to have maximum number of overs, so I think that's the right call. The only concern I feel, there is only boundaries on offer, because both of these won't run really well on between the wickets. Shaheen is bowling well. He's keeping the batsman in check, bowling some real serious Yorkers out here. End of the over, is it? Yes, it's 2 overs bowled. It's 21 for 1.
That's your 11 for Sindh today, being asked to bat first. Khurram Manzoor has been dismissed just now in the previous over, bowled by Shaheen of a perfect Yorker. Junaid Khan has been brought into the attack, so Hafiz gets just that one over. He's hit for 3 boundaries by Khurram Manzoor. The reason why Hafiz was brought in was Sharjeel being left-hander, but he only faced 1 delivery. Probably could have brought him again for 1 more over. But we've seen how Rizwan has been operating in this tournament. He's bringing in those short bursts in overreach. He's got lots of options available. You can look at the bowling options that KP has. We'll talk about that after this ball. Nice left stop. When we look at that, Mohammad Hafiz showed me. We're talking about Spain, Iftikhar Ahmed. Fakhar Zaman was also given the ball in the tournament. Asif Afridi. There's so many options they have. Sometimes it's quite blessing, but you know, it depends how the pitch plays. They would need some overs from them, and especially if the ball started to turn, it will be nice for Rizwan to have so many off spinners, left-arm spinners under his belt. He's got 8 bowling options. And it's down the leg side. There's a no ball given by the umpire, so straight away an extra run, extra delivery, a free hit as well. Yeah, it's T20 cricket. You don't want to give free hits. Very close, but I think it was right call. Or maybe just very close. So these kind of mistakes cost you very heavily. Slightly harsh, one would feel. It's all about where your foot lands, not where it ends. You see Junaid, when he lands his foot, then it skids through and just gets onto the line. But all in real-time action, yes, you've got to give it to the umpire that, yeah, he would see that as a no-ball. Bowlers do tend to use use the popping crease as much as possible. Slower one, it's been picked up by Sharjeel. That should earn him. Oh, that's well done. That's very well done, just slapping it back into play. That's nicely fielded by Mohammad Hafiz. He's quite senior, and but he's still showing his commitment. They both ran 3. Nicely done by Hafiz. I think he was angry at his teammate, where someone needed to back him up. Yeah, Azhar, you know, they ran 3 on the previous delivery. That's really good work. We were talking about how they probably would enjoy stand and deliver. Yeah, obviously that was 3 in any case. Running between the wicket is so crucial. It just takes off pressure sometimes when you can have 1-2s continuously. Then you have 1 boundary, then it becomes a big over. It's just the way Azam is having a look at the field. He wants to know where he wants to attack. He's got a deep mid-wicket. He needs to keep that in mind. And he's got a deep square leg. He's bowling middle leg at the moment, Junaid. Quick single taken. He's trying to drag that one from outside the off stump. Yeah, it's just kind of a cutter into the pitch by Junaid Khan.
he knows that the wicket is not a very quick one. So if he needs to bowl short, he needs to change his pace as well. So there was no pace on offer for Azam Khan. You can see he was early on the shot. Junaid Khan will do that because he knows that his pace has gone down a bit. So, but he has loads of experience. Width on offer, and it's taken by Sharjeel. Yeah, you don't want to bowl there to Sharjeel Khan. Short and wide, and smashed it through cover. One just feels that the key against these two batsmen would be taking pace off. But you don't want to get too predictable as well. So you've got to really think what you're going to bowl as a bowler to these two powerhouses. It's the last ball of the over coming up. Three bowled, it's 31 for 1. Sharjeel and Azam out there, they're looking good. Sindh have lost Khurram Manzoor of a brilliant Yorker. Shaheen Afridi bowled. KP won the toss, decided to field first today in match 11. Here's Shaheen once again. He's trying to shape that into the right hand, just not getting it right. Yeah, his two boundary riders are on the leg side, so he wants to keep it straight. So this time around was started off too far on the leg side. Shaheen has been in great form. He got 32 wickets in this year in T20 cricket, which is only second. He's only second behind Rashid Khan. It's gone off a top edge. Azam is lucky, could have gone easily anywhere near a fielder. Yeah, good bowling by Shaheen Shah. He had square leg and fine leg back. He wanted to bowl short at Azam Khan. He got lucky there. Fell just in the gap. Talking about Shaheen Shah, his attitude towards his bowling is amazing. Whichever format he's playing, he's looking to pick up wickets. Again, it's good Yorker, and I think the fielder on square leg was very late to move. Maybe he lost the ball somewhere, because the bowler is very right and just giving a stare. He took forever to move to his left. Yeah, he ran on the wrong side, but it was again good delivery, went for 4. Nicely played by Sharjeel Khan. It's not an easy ball to play, but I think the fielder lost it. He didn't see the ball first up, but yeah, these kind of boundaries going to cost. This time to the right of the square leg fielder. This was a better attempt, restricting them to just a single. Yeah, that's where running between is so much important. It was 2 there to be taken, but there was not a real attempt to get even the way they ran the first run. It didn't look like they're going to get the second one. So that's where I always feel the fitness comes in.
Oh, it's up edge taken. A lot of bottom hand on that from Azam. He just couldn't control the shot. That's a good catch in covers. That's a fantastic catch. It looked like it's not going to carry, but Hafiz just put full effort in it and managed to grab a very good catch. I think it was change of pace where Azam Khan mistimed it, and what a catch that was. Yeah, sort of a stop back shot. Azam goes for 3 of 8 deliveries, and Sindh now in a bit of bother. 38 for 2. The captain comes out. He batted number 4, so I'd say he's promoted himself. You'll have the new ball player Hassan, who usually comes in. But if you feel as a captain that you can control things out there, then why not? Here's the wicket. Yeah, that was a slow one, which Azam Khan didn't pick. He was looking for the boundary because he had only 3 runs of 7 balls, so the ball just dipped on him. That's the advantage of bowling full and straight. He's hardly giving any room to the batsman. Talking of Sarfraz is the guy who just can anchor the inning now, and he also plays the spin well, so this is the right time to come for him. Can build the inning for Sindh. A smart bowler will pick it up. If you know the batsman is just out there with a hammer, then you know that he's already got that prepared mind that I'm going to go after you. So in that case, very nicely done by Shaheen. Bowling a slow one, just rolling his fingers over the seam, getting that Yorker. And you see that Azam tried his level best to move his bottom hand off the handle, but still it carried off to Hafiz, and full marks to Hafiz, diving forward and taking that catch. Single to end the over. So 4 gone, it's 40 for 2. पहले 4 ओवर्स में बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है। 40 रन्स बनाए हैं सिंध ने और 2 विकेटें हासिल कर ली शाहीन आफरीदी ने। बड़ा अच्छा स्पेल किया और इसमें भी कोई बुराई नहीं अगर उनको मज़ीद 1 ओवर के लिए यहाँ आजमा लिया जाए। ये हज़रत शाह रुकन आलम का मकबरा है, मुल्तान की पहचान है इस वक्त दुनिया भर में। ये 14वीं सदी में ये इस गेंद लगता ये है कि बल्ले से टकरा गई थी पैड पर लगने से पहले, और दूसरा रन भी हासिल किया। सरफराज ने आमादा किया शर्जील खान को दौड़ने पर। सिंध का रन रेट देखा जाए तो सही चल रहे हैं, लेकिन विकेट्स का कॉलम जो है थोड़ा सा उस पर गौर करना पड़ेगा। अपील की थी इस बॉल पे, इनसाइड एज लगा और इसके नतीजे में 2 रन हासिल किए। सरफराज ऊपर आए हैं और लग ये रहा है कि जिम्मेदारी लेके
कैप्टन इनिंग खेलना चाहते हैं और वो चाहते भी यही थे कि पहले बैटिंग करें। इस वक्त स्लिप में कोई फील्डर नहीं, थर्ड मैन को भी दायरे के अंदर लाया गया है। से बड़ी खूबसूरती के साथ खेला और फील्डर के लिए आखिर में मौका नहीं था। उछलते हुए इस कैच को लेने की ज़रूर कोशिश की गई। फ़खर जमान थे जो ऐसे कैचेस आमतौर पर पकड़ लिया करते हैं, लेकिन बहुत तेज़ शॉट था, इसलिए फ़खर जमान की जो जंप की टाइमिंग थी वो सही नहीं रही। बहुत खूबसूरत शॉट। शजील खान को इस लाइन और लेंथ पे बॉल कराने का मतलब है कि आप रन्स के लिए जाएंगे। खूबसूरत टाइमिंग छक्के के लिए। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ इन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, 74 रन की शर्जील खान ने, और अपनी फॉर्म दिखाई थी उस दिन जो नासाज थी कदरे इनकी फॉर्म, जहां तक पाकिस्तान सुपर लीग 5 का ताल्लुक है। और ये मिसाली क्रिकेट है। अच्छा सिंगल लिया, गेंद ज़रा सा फील्डर हफीज़ के दाएं तरफ थी और उसी का फ़ायदा उठा लिया। सरफराज अहमद ने एक मरतबा फिर कॉल किया था। सरफराज अहमद बहुत एक्सपीरियंस बैटर है। फील्डर्स कहाँ मौजूद है, कौन से वीक लिंक्स हैं फील्डिंग में, बखूबी जानते हैं ये। और इस बार उनको अंदाज़ा है कि खाली बिग हिट्स से स्कोर नहीं होगा, रोटेशनल स्ट्राइक भी ज़रूरी है। शजील खान के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है। धूप में आज कल जैसी शिद्दत नहीं है। इस बार फ्लैश या शाहीन अफरीदी से बहुत पहले गेंद को टिप्पा पड़ गया था। सरफराज अब दो पर हैं, उनकी ख्वाहिश होगी जल्द अज जल्द स्पिनर आ जाएं, और स्पिनर्स को ज़ाहिर लाना पड़ेगा। ज़ुहैब लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिन्हें आज खिलाया गया, उन्होंने ड्रॉप करने का फैसला किया। अपने जो राइट आर्म लेग स्पिनर थे मोहम्मद मोहसिन, उनके अलावा आसिफ अफरीदी एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। ये दोनों मुख्तलिफ अंदाज में स्पिन बॉलिंग करते हैं, अफरीदी और ज़ुहैब खान। उसे बड़ी खूबसूरती से खेला शर्जील खान ने, वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की जानिब 4 रन्स। शर्जील के फेवरेट शॉट्स में से एक है। खूबसूरत गैप पिक किया और किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, सब खड़े होके देखते रहे और गेंद बाउंड्री के पार। फुल लेंथ थी इस बार जुनैद खान की जानिब से, और इस तरह की लेंथ शर्जील खान कभी मिस नहीं करते। यहाँ बहुत ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन टाइमिंग लाजवाब रहती है। कलाई का भी अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नज़ारा हमने देखा पिछले स्ट्रोक में। आगे निकल गए थे लेकिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी नहीं गए, ये अच्छा हुआ सिंध के लिए। इस ओवर में 14 रन बने, 5 के बाद 56 पर 2। ये शॉट है, क्या कहते हैं? वो यहाँ रख दिया। आज़म और शर्जील जिस वक्त खेल रहे थे तो यही दो सिंध के सबसे अच्छे T20 बैट्समैन लगे हैं हमें इस टूर्नामेंट में। तो कोशिश यही होनी चाहिए टीम इंतज़ामिया की, कोच की और ख़ुद कप्तान की भी, कि जो आपके T20 के बेहतरीन बैट्समैन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स खेलने का मौका दिया जाए। इस तरह की विकेट पे जहाँ बहुत ज़्यादा बॉलर्स को हेल्प नहीं मिल रही, आउटफील्ड अच्छी है, सीधी विकेट है, इस पे T20 के स्पेशलिस्ट अगर जाते हैं जल्दी, थोड़ा सा टाइम लेके उसके बाद उनके पास मौका होता है कि वो बड़ी हिट्स मार सकें। कैच किया इसे सरफराज अहमद ने और वो अपनी विकेट गंवा बैठे।
पहली गेंद पर कामयाबी से हमकनार हुए। यहाँ वहाब रियाज एंगल था जिसे सरफराज ने खड़े खड़े खेलने की कोशिश की और उसी पर मात खा गए। वहाब रियाज लेफ्ट आर्म का एंगल अच्छा, राइट हैंडर के क्रॉस किया, लेकिन सरफराज अहमद जो कोशिश कर रहे थे अब दी ऑर्डर आके टीम को संभालने की, उसको गोल करने की, नाकाम साबित हुए। इजी एज कीपर के हाथ में। 54 पर 3। जब इन दोनों टीमों का आमना सामना फैसलाबाद में हुआ था 12 माह पहले, तो एहसान अली मैन ऑफ द मैच थे। उस मैच में सिंध ने हरा दिया था केपी को। इन्होंने वहाँ पर 64 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी, 8 रन से शिकस्त दी थी सिंध ने उस मैच में। रियाज इस वक्त अटेम्प्ट कर रहे हैं सिंध के बैट्समैन को ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छा एंगल पोज कर रहे हैं। स्लिप पोजीशन में आ गई है, तकरीबन सेकंड स्लिप लगती है। ये वो विकेट है जिसके नतीजे में एहसान अली आए। ज़्यादा फुट मूवमेंट नहीं था, आउटसाइड ऑफ स्टंप, बैट को सिर्फ फ्लैश किया और एज करके वापस पवेलियन लौट गए। इस तरह की पिचेस पर बॉलिंग करना पसंद करते हैं। बाउंस है मुल्तान की पिचेस पर, हमने देखा है। वहाब रियाज का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर सबसे ज़्यादा बाउंस मिलता है फास्ट बॉलर्स को। जो कि पिछले बरस ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, हैरानकुन तौर पर। ये वाइड और शॉर्ट थी और इसका बराबर फ़ायदा उठा लिया। एहसन ने ज़ोरदार शॉट खेला और अभी भी क्योंकि पावर प्ले ऑन है और कोई फील्डर नहीं थर्डमैन के अलावा रोक टोक के लिए। दोबारा वही बॉल कराना चाह रहे थे वहाब, अच्छी लेंथ थी, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप था, लेकिन इस बार एहसान अली के नतीजे, एहसान अली की फेवर में गया नतीजा, चौका हासिल किया। परफेक्ट गैप, परफेक्ट टाइमिंग। बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं एहसान अली। पाकिस्तान के लिए ये T20 क्रिकेट भी खेल चुके हैं। ये दोनों इंटरनेशनल बैट्समैन हैं, शर्जील और एहसान। फिर खेलना चाहते थे पॉइंट के बराबर से, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। और अब तक ये 5.5 ओवर्स में 58 रन बने हैं। रन बनाने की औसत 9.9 है सिंध की, जबकि जो टूर्नामेंट का रन रेट है वो 9.3 है, उससे ये आगे चल रहे हैं। स्कोरिंग रेट कभी भी सिंध के लिए मसला नहीं रहा। अच्छे T20 बैटर्स हैं, अटैकिंग बैटर्स हैं, लेकिन विकेट्स जो हैं वो उनके लिए मुश्किलात नहीं है। शर्जील ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली भागने में आखिरी गेंद पे। पावर प्ले ख़त्म हुआ 58 पर 3। पावर प्ले खत्म हुआ है। अच्छा स्कोर है सिंध का, लेकिन 3 विकेटें गिर चुकी हैं। T20 क्रिकेट के जो स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं, जो रिसर्च की गई है, कि अगर 3 विकेटें को टीम गंवा दे पावर प्ले में तो उसकी जीत का इम्कान सिर्फ 25% रह जाता है। लेकिन यहाँ जब तक शर्जील खान है ये इससे ज़्यादा रहेगा। मरीना
बिल्कुल। और एहसान अली है आगे, मेरा ख्याल है कि सुहेल खान तक बैटिंग जाती है, अनवर अली मौजूद है। आसिफ अफरीदी ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी। लपितुली बॉलिंग करते हैं अच्छी लेंथ के साथ, फ्लैटेड ट्रजेक्टरी है इनकी, इसलिए मारना भी इतना आसान नहीं। लेकिन स्क्रीन पे जो मौजूद है इस वक्त शर्जील, उनको स्पिनर्स के खिलाफ अटैक करना बहुत पसंद है। जी हाँ, इसलिए पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं शर्जील खान, हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं लेते स्पिनर्स पर अटैक करते हुए। उसकी वजह आसिफ अफरीदी के पास वेरिएशन है, ना सिर्फ ये कि लेंथ की वेरिएशन है बल्कि अपनी रफ्तार में जो वेरिएशन लाते हैं उस पर इनको बहुत मलका हासिल है। T20 क्रिकेट में ये बहुत ज़रूरी होता है, बैट्समैन को लगे कि जैसे गेंद बिल्कुल उसके करीब पहुंच रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा ना हो, पिच से दूर रह जाए। यही खूबी है आसिफ की। बिल्कुल, वेरिएशन स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, दोनों के लिए स्पेशली इस तरह की विकेट और इन मैचेस में बहुत ज़रूरी है। एहसान अली पिछले मैच में कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए, उम्मीदें काफ़ी थी उनसे। आज उन्हें एक और मौका मिल रहा है और टाइम भी थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा सा वेल सेटल इन हो के इनको चाहिए कि अपनी शॉट्स खेलना स्टार्ट करें, क्योंकि सिंध एक टारगेट पोस्ट करने जा रहा है। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर देखा जाए, सिंध ने सेंट्रल पंजाब को शिकस्त दी थी, एक ही मैच जीता है। रात बहुत दिलचस्प मुकाबले के बाद उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। नॉर्दर्न को अच्छा चैलेंज किया था इस टीम ने। नॉर्दर्न के हाथों दोनों ही टीमें ये हार के आई हैं। यहाँ पहले मैच में केपी को बड़ी शिकस्त हुई थी 79 रन से, लेकिन उसके बाद ये टीम संभल गई है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में। बड़े नाम मौजूद हैं इस टीम में, लेकिन अगर नाम सिर्फ कागज पे रह जाए और ग्राउंड में नजर ना आए तो वो आपकी टीम के लिए मसला बन सकते हैं। लेकिन केपी ने ये सही कर दिया। 3 विकेटें गिर चुकी हैं, इसलिए दोनों बैट्समैन खबरदार होकर खेल रहे हैं। रोलिंग शॉट इस ओवर में नजर आए। 7 ओवर्स मुकम्मल होने पर मजमुआ है 63। लरी बस परवाना की लरी 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 हाँ अगला वो या अभी शायद शेबू ऐसा पाया शेब भाई अभी तो ठीक है, अभी बाहर हो जाना थोड़ा सा। अभी तक हमने गेंद को टर्न होते हुए नहीं देखा है इस पिच पर। तो ये तीसरा स्पिनर है जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। उठाकर खेला, कई मौके पर ये फास्ट बॉलर के खिलाफ मिड ऑन और इस इलाके में कैच आउट हुए हैं। शर्जील खान बॉटम हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल कर बैठते हैं। इस बार उनकी खुशनसीबी थी कि गेंद पहले गिर गई साहबजादा फरहान से। आप पिच रिपोर्ट देने के लिए गई थी मरीना। ये यूज्ड पिच है जो आज भी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन अभी तक स्पिनर को हमने उतनी मदद आते हुए देखा नहीं है। पिच वैसे तो बैटिंग ट्रैक है, लेकिन थोड़ी सी स्लोअर साइड पे रीयूज हो रही है। इसी विकेट पे 180 जो है वो डिफेंड किया था बलूचिस्तान ने। अभी इस तरह लूप देखने को नहीं मिला स्पिनर्स की जानिब से। और इस बार तेज गेंद थी, इसे विकेट कीपर भी कलेक्ट नहीं कर सके। शर्जील खान की भी समझ से बालातर थी। ये क्रीज का इस्तेमाल किया था, उसके बाद ये बाउंस हुई। इतनी ज़्यादा बाउंस की तवक्को नहीं कर रहे थे खुद शर्जील भी। भाई बड़ी इनिंग्स खेलने के मूड में लग रहे हैं। और इसे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर निकाल दिया।
ख़राब गेंद थी, एंगल मिल गया था शर्जील को। इसे सिर्फ बल्ला लाना गेंद पर ये काफ़ी साबित हुआ। इतनी अच्छी पिछली बॉल की इन्होंने बैट्समैन को थोड़ा सा कंफ्यूज किया और फिर एक तरह से फ्री हिट दे दी डाउन द लेग। इस फील्ड के साथ एक तरह से फ्री बाउंड्री जो है शर्जील को मिली है। शर्जील वैसे तो ऑफ साइड में भी अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं, कट और सामने की जानिब, लेकिन ज़्यादा रन्स वो ऑन साइड में ही बनाते हैं। पीछे रहना, पीछे रहना। इस मैच के फील्ड अंपायर हैं फैसल आफरीदी और प्रोफेसर आफ्ताब गिलानी। खुदी 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 ओवर ख़त्म हुआ चाहता है। इफ्तिखार ने नपी तुली बॉलिंग की, 69 पर 3। Spinners operating from both ends. It's been a decent start. Sindh would have expected not to lose 3 wickets, but good thing is Sharjil's out there and he can up the ante at any time. Satisfied with the start that Sindh have got? Yes, good afternoon, Bazit. Sharjil Khan has gone off to a good start today. Was out early dismissal last night. Playing well today, looks like he's going to get a big score. Set this up nicely and we know he's got power. And when that power comes to the fore, we'll have to wait and see. Left arm spin. Sharjil should fancy this. Yes, Sharjil must feel gutted for not putting this ball away. It was slightly short and a little bit outside. Could have pierced through for a boundary. Bowling quite flat, but the length is good. He's just back of a length. Not allowing Sharjil the leverage to get underneath the ball. Not get at it. I think Ehsan has a role to play now. He needs to get some boundaries away just to get the momentum going for himself. Pushing for 2 real quick, but Sharjil says no very early there. Yes, today's a really good opportunity, Bazit, for Ehsan Ali to step up. Sindh being 72 for 3. These are those middle overs after the power play. Their main players who's been performing, Azam Khan and Khurram Manzoor, are out early today. So it's a good opportunity for Ehsan to step up, go big. Terrific over by Asif Afridi. Just 4 runs off. It's 73 for 3. शाबाश guys, easy नहीं होना, अभी मारेंगे. Big shot, big shot, big shot. सभी बस. सभी थोड़ा पास भाई. आ जाओ. सीधा shot. Down the ground, and once you go fuller in length, any type of spin will disappear. Big 6 by Sharjil Khan, right under the bat, was waiting for that ball and displaces it really well, far and long over long on. Just you see there, just nice base in the slot, and all he had to do is pick it up and time it with all his power.
And that's the problem for spinners. They can't err in length. If you go full, Sharjeel will take full toll. And if you go short, he'll take full toll as well. That's terrific hitting. Fireworks from Sharjeel Khan. What a flat six you see, just he dropped it short. He was waiting for that one. And 2 balls, 2 sixes in a row, Bazit. Yeah, 2 balls and 20 trees will now be planted. PCB and tuck. 2 trees for Sharjeel, courtesy Iftikhar. Slows it up. 49 now, but that's the danger of Sharjeel having batted the overs. He now can really up the ante. And we know that he can really go big. With that single maybe coming back for the second, he'll get the second as well and bring up his 50 just off 32 deliveries. Yes, Sharjeel Khan back on the runs, out early, but once again, 10 overs in, Sharjeel Khan well set. Another half century, must feel good that even though he got out early, he must have been determined for these back-to-back matches and performed well for Sindh today. Just slowing it down slightly. Needs to get out of this over. He's already gone for 14. Goes full and been dispatched, smashed out of the ground. Third maximum for the over. Big ones from Sharjeel Khan. He's on the move. Send 93 for 3. PCB and Taka getting busy. 3 maximums that last over. 30 trees being planted. But more importantly for Sindh, Sharjeel Khan is on the go. .57 of 34 deliveries, and we know how dangerous he is. Last over, 3 maximums. Yesterday, the day game, the first innings, last 10 overs went for 144, 143. And you feel that if Sharjeel bats another 6-7 overs, well, 200 and more on the cards. Having a discussion with Asif Afridi. Asif Afridi's bowled well. He stayed away from Sharjeel's strength, not giving him much to hit, but that last over from Iftikhar, 3 maximums. And now the pressure well and truly on Asif Afridi because of the fact that Sharjeel's got that range going. This should be interesting now because Sharjeel in that previous over started that 6 hitting mojo. Where does he go now? So far in his spell, he's just been back of a length. He's not allowed Sharjeel the length to get under. Goes too short this time, pulled away. Sharjeel just swivels on that. Power does the rest. Boundary. Dealing in 6s and boundaries only, Sharjeel Khan. Playing really well today. He bowled it short into his pads, and that's his bread and butter shot. He just waits for anything a little bit short. He's going to be quick on his back foot.
and pull it over mid-wicket, square leg. Better length, tighter into the stumps. Just can't afford to miss your length slightly, because even a miss hit from Sharjeel is better than a couple of hits. If I hit the ball twice, I wouldn't get as far as what Sharjeel does with a miss hit. A misfield right there. Yes, well, Sharjeel Khan so far has been playing a responsible inning, but he has to be held accountable to bat through. As long as he's at the wicket, Sindh will get runs quick, and they have to post a big score to defend on this pitch and this cricket stadium, Multan Cricket Stadium, Bazid. Ehsan Ali joins in the fun. Slightly leg side, swung away. Gets a boundary towards deep square leg. Nice hit onto the pads. Ehsan Ali just threw his hands at it. He's getting in his groove, getting well set. Nice boundary by Ehsan. In the last over, 10 already in this 11th over. A single to end the 11th, so 31 of the last two. Well and truly, Sindh have pressed on the accelerator. Great start by Shaheen Shah Afridi, bowled it full. Nine overs remaining. Iftikhar went for 20 in his over, so had to be replaced. And Rizwan rightly bringing back Wahab. KP needs to stem the flow, needs to get a wicket. Ideally, need to get Sharjeel. Well, just one over. He's got a wicket in that over, Wahab has, but now the matchup is Wahab versus Sharjeel right now. If Wahab can dismiss Sharjeel, I think the pendulum will swing. Good smart change by Rizwan, bringing the wicket taker Wahab Riaz back on into the bowling attack. Got Sarfraz out on an early dismissal call behind. Sindh do need wickets in hand. To that leg side, bit of control, back with Wahab. I think Sharjeel also senses the danger here. But it's T20 cricket, you can't really sit on any one bowler. Need to be proactive, need to be getting those boundaries consistently. We've seen high scores being, well, almost being chased down, so don't know what will happen in the second innings. So it's about maintaining that run rate. And if you try and sit on a bowler, it sometimes becomes the actual difference between winning and losing a game. Also in the outfield, Sindh's fielding maybe not as good as KP's, or even we saw the difference yesterday by losing for 13 runs, Bazit. So they have to project a big score right here. They've changed their batting lineup completely after the first game, so they got more explosive batsmen into the lineup now. A quick bouncer that. It's been given a wide.
Faisal Afridi just got a nod and then decided that it was a wide. We touched upon Sindh's fielding, and there's probably the only skill in cricket which is correlated with fitness, that is fielding. And because it's the Sindh team and because you live in Karachi, I think you've got more work. I'll try my best, Basil. It looks like Wahab's footing and his rhythm with his run up, he's being a little uncomfortable. He's done this before. He's always bowled with the passion, bowled with intensity. It's nice, hot and humid out here in Multan right now. It's been a limited over so far. He's bowled a good over. Rizwan has used him well this whole tournament so far. KP needed this. They needed an over which sort of calms it down. Last couple of overs, Sharjeel had really taken off, and he's batted so well from the word go. Does possess power, but he started off timing the ball well too. And then we know that he can lift it and lift his scoring rate with ease. Massive hits to the leg side. Nicely placed by Hassan Ali. Single. 110 for 3. शाहीन अफरीदी के आज भी 2 ही ओवर्स कराए गए नई गेंद के साथ। उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। वहाब रियाज और जुनेद खान, हालांकि ये 2 ऑप्शंस कप्तान के पास रहते हैं डेथ ओवर्स में। 1 ओवर और करा सकते थे, जिस तरह विकेटें ले रहे थे नई गेंद के साथ शाहीन। कभी कभार ये सवाल उठता है जब वो पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे होते हैं शाहीन अफरीदी, तो नई गेंद के साथ ज़्यादा मौसर हैं अब तक। आज़म बिल्कुल शोएब मलिक आए हैं अभी बॉलिंग करने को। अच्छा चेंज लग रहा है ये, क्योंकि शर्जील खान ने स्पिनर्स को काफ़ी हिटिंग की है, लेकिन शोएब मलिक ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं जो उनको आउट कर सकते हैं। जी, शाहीन का ये है कि नए बॉल से ज़्यादा इफेक्टिव ज़रूर है, लेकिन T20 क्रिकेट में आखिर के 2 ओवर हैं जो 5-6 ओवर होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक उन्होंने 1 ओवर शायद मिडिल में कहीं यूज़ करने के लिए रखा और एक एंड पे। तो मेरे ख्याल में एज ए कैप्टन बहुत टफ होता है समटाइम 3 ओवर करा देना है। के बाहर पिच हुई थी, अंपायर फौरन ही अपनी जगह से हट गए। अच्छे अंपायर्स में शुमार किए जाते हैं आफ्ताब गिलानी, बहावलपुर से आते हैं। इस एंगल से मुश्किल है LBW हासिल करना राइट हैंडर के खिलाफ राउंड द विकेट आकर। बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ बॉल और कॉन्सिस पिच आउटसाइड द लेग स्टंप, तो आउट तो नहीं होता, लेकिन प्रेशर डालने की कोशिश की शोएब मलिक ने ज़्यादा। अब ये जो कॉन्टेस्ट होगा शर्जील के साथ, एक्सपीरियंस और फायर का जो है ललचाया, गेंद को हवा दी शोएब मलिक ने कि यहाँ पर बड़ा शॉट खेले हैं अगेंस्ट टर्न। शर्जील ने इस बॉल को थोड़ा सा चेक करने के लिए रोका और आई एम श्योर कि वो इस ओवर में ज़रूर बड़े शॉट्स के चांस लेंगे। यहाँ इस वक्त नेल्सन है, अगर हम मजमुआ देखते हैं 1-1-1 3 खिलाड़ी आउट हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि इस मरहले पर कुछ होता है।
इंग्लैंड के एक अंपायर हुआ करते थे डेविड शेफर्ड, वो बेचैन हो जाया करते थे नेल्सन पे। और ये शानदार छक्का, शर्जील बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं और उन्होंने अपनी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया। फ्लाइट किया था बॉल और शर्जील के बिल्कुल आर्क में बॉल था और डिसअपॉइंट नहीं किया शर्जील ने बिल्कुल भी। बहुत ज़बरदस्त हिट लगाते हैं, बहुत पावर है इनमें। मिस टाइम भी होती है बॉल तो बड़े आराम से बाउंड्री क्लियर कर जाती है। उसी स्ट्रोक को दोहराना चाहते थे, फील्डर आ रहे हैं लॉन्ग ऑन से और वक्त मिल गया था लेकिन गलती कर बैठे। आखिर में वहाब रियाज बिल्कुल बाउंड्री के साथ मिले हुए खड़े थे, वहीं से दौड़े। खासा फासला तय करने के बाद गेंद उनके हाथों में निकल गई। बहुत लेट भागे वहाब बॉल की तरफ और इन दी एंड उनको पूरी स्प्रिंट लगाना पड़ी बॉल की तरफ। थोड़ा सा लेट हो गए बॉल को जज करने में और जब आप बॉल की तरफ तेज भाग के आते हैं तो सम टाइम फिर ये होता है। अच्छा मुकाबला हो रहा है। शोएब मलिक ने तकरीबन छक्का लगने के बाद ये बाजी जीत ली थी लेकिन फील्डिंग से उनको ज़्यादा मदद नहीं मिली। शर्जील का विकेट केपीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ओवर में 8 रन बने, एक चांस क्रिएट किया शोएब मलिक ने। 13 के बाद 119 पर 3। जुनैद खान अपना दूसरा स्पेल करने के लिए आ गए हैं। खुर्रम मंजूर सबसे कामयाब बैट्समैन हैं सिंध के अब तक, आज 17 रन बना सके। आजम खान वनडे खेलने के लिए आए थे, उससे बड़ी उम्मीदें थीं जो आज पूरी नहीं हुई लेकिन ये एक मुस्तकबिल का सितारा लग रहा है T20 क्रिकेट का पाकिस्तान में आजम खान। अब अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही है शर्जील और एहसन के दरमियान, इसमें 65 रन पहले ही बन चुके हैं। ये दो बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं। यहाँ पर शर्जील काफ़ी आगे निकल गए थे, ये रन बन सकता था अगर शुरू से ही इसमें दिलचस्पी लेते एहसन। बिल्कुल T20 क्रिकेट में आपको ये इस तरह के रन लेने पड़ते हैं और स्पेशली जैसे जैसे इनिंग्स क्लोज होगी तब तक आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है रनिंग बिटवीन द विकेट में भी। और जुनैद अब वापस आए हैं और बड़ा कोई इतना इकोनॉमिकल नहीं रहे पहले 2 ओवर में, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और इस तरह की कंडीशन में एंड ओवर्स में इनके यॉर्कर्स भी मशहूर हैं, इनके स्लोअर कटर्स भी मशहूर हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये आज बॉलिंग करते हैं। एक और तेज़ गेंद बैट्समैन की तवक्को से। तो वो जो यहाँ पर एक बहस छिड़ी थी कि तीसरा ओवर कराया जा सकता था यहाँ पर शाहीन अफरीदी से, उस वक्त 2 विकेटें वो ले चुके थे 2 ओवर में अज़हर, और अगर वहाँ पर उनसे तीसरा ओवर कराया जाता, शर्जील से वो छुटकारा दिला देते अपनी टीम को, तो शायद इस मैच में मुस्तकिल ही पलड़ा भारी हो जाता केपी का। बिल्कुल ऑप्शन उनके पास था और शाहीन अगर आपको वहाँ पे विकेट से ला रहे थे तो आप रिजवान जा सकते थे उनके साथ, लेकिन क्योंकि आपके पास जुनैद की शक्ल में और वहाब की शक्ल में ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो एंड पे ओवर कर सकते हैं, आपको 4 ओवर वो आप उनके रख सकते हैं। तो ऑप्शंस क्योंकि इतने ज़्यादा हैं रिजवान के पास, तो पूरा ऑप्शन ना होता और अगर विकेट मिल जाती तो आई थिंक बैटिंग लाइनअप की बिल्कुल ही कमर टूट जाती। फील्डर इस गेंद तक पहुंच गए। ज़ोहेब खान, उनसे आज बॉलिंग नहीं कराई गई।
हालांकि 4 स्पिनर्स को उनके कप्तान अब तक आजमा चुके हैं। अगर हम देखते हैं इफ्तिखार अहमद, उनसे भी पहले मोहम्मद हफीज़, और फिर बाद में एक एंड पर अफरीदी बॉलिंग करते हुए नज़र आए, आसिफ अफरीदी, और साथ साथ शुएब मलिक भी। लेकिन ज़ुहैब खान जो लेफ्ट आर्म माने हुए स्पिनर हैं वो नहीं। बिल्कुल लेफ्ट आर्म स्पिनर समटाइम, क्योंकि शर्जील की प्रेजेंस बहुत इफेक्ट करती है डिसीजंस को। एक ही हाथ से खेल सके। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं जुनैद, चेंज कर रहे हैं पेस को, कभी यॉर्कर्स और कभी स्लोअर कटर्स और फिर कभी तेज़ लेंथ बॉल। प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं हो रहे, जो कि की है। और जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर की हम बात कर रहे थे, शर्जील खान विकेट पे मौजूद हों और इवन ऑफ स्पिनर को वो छक्के लगा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को उस टाइम पे बॉलिंग कराई जाए। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस पिच पर कितने रन्स काफ़ी हो सकते हैं। हालांकि T20 क्रिकेट में कोई भी स्कोर महफूज नहीं होता, लेकिन अज़र आपकी पिच रीडिंग क्या कहती है, मुखालिफ टीम की बैटिंग को जब आप सामने रखते हैं जो कि इनफॉर्म है, रिजवान के अलावा मोहम्मद हफीज़, इफ्तिखार अहमद, कितने रन सिंध को बनाना चाहिए? नहीं, 180 प्लस तो मेरे ख्याल में इस टाइम पॉसिबल है बिल्कुल, और 180 प्लस ही इनको टारगेट करना चाहिए। इस बार स्विंग एंड मिस। अच्छा ओवर रहा जुनैद खान का, जिसमें सिर्फ 4 रन बने 123 पर 3। ये मुल्तान का तारीखी और कई हज़ार साल पुराना शहर है, और ये स्टेडियम इस शहर से ज़रा सा एक ज़माने में फासले पर था। इसके इर्द गिर्द बागात और हरे भरे खेत होते थे, लेकिन अब आपको ये बस्तियाँ बसी हुई नज़र आ रही हैं चारों अतराफ इस क्रिकेट स्टेडियम के। हाँ, इस शहर से बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, सियासी हस्तियाँ, क्रिकेट की हस्तियाँ। इसके अलावा ये इल्मी मजहबी मरकज़ है, और ये तिजारती मरकज़ भी है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा मुल्तान। वहाब रियाज बॉलिंग अटैक पे वापस आए हैं, और कुछ अनकंफर्टेबल नज़र आए वहाब भागते हुए। मे बी जो कैच ड्रॉप हुआ था वो शायद वो बॉल उनके नी पे या नहीं हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो मे बी हैमस्ट्रिंग टाइट है। तो बड़ा क्रूशियल होता है कि बॉलर वहाब रियाज जैसा बॉलर आपके पास पूरा मुकम्मल फिट हो। वहाब रियाज जो हैं कैलेंडर ईयर 2019 में पाकिस्तान के सबसे कामयाब ये विकेट टेकर थे। इनने 60 विकेटें ली थी हर तर्ज की T20 क्रिकेट में, और इस बरस शाहीन अफरीदी सबसे आगे हैं। वो आज की 2 विकेटें मिलाकर 34 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं इस फॉर्मेट में। लेफ्ट आर्म सीमर्स का हम समझते हैं राज है। बिल्कुल, वहाब रियाज का अगर आप थ्रू आउट PSL करियर देखें और T20 लीग्स में देखें, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। बहुत गेम मैचेस जिताए इन्होंने अपनी टीम्स को। और फुल टॉस, इसे डिस्पैच कर दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये पहली फुल टॉस नहीं थी, ना ही शायद आखिरी थी इस टूर्नामेंट में। यॉर्कर करना चाहते थे वहाब रियाज, मिस किया यॉर्कर, और एहसान अली की तरफ से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इनसाइड आउट, और छक्का ऑलमोस्ट हो चुका था। बहुत ज़बरदस्त टाइम किया इस शॉट को।
कहा जाता है कि फुल टॉस को आपको क्रॉस खेलना चाहिए, क्रॉस बल्ले के साथ, लेकिन इन्होंने इसको सीधे बल्ले का इस्तेमाल करते हुए खेला। काफ़ी दिलेर क्रिकेटर हैं, कई माजी में बड़ी उम्दा इनिंग्स खेल चुके हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी नुमाइंदगी करते आए हैं एहसान अली। बिल्कुल बहुत प्रॉमिस शो किया इन्होंने जब पहले साल ये कोयटा के लिए खेले थे। थोड़े से ऑफ कलर नज़र आए हैं लेटली, लेकिन टैलेंट और पोटेंशियल इनके अंदर मौजूद है। थोड़ी सी और मेहनत करें तो बहुत अच्छा इनका कैरियर बन सकता है। ये खराब गेंद थी, बहुत बाहर लेग स्टंप के हुए। लकी रहे वहाब रियाज के एक ही रन सीड किया, क्योंकि अगर ये बल्ले पर आ जाती तो फाइन लेग पर जुनेद खान सर्कल में थे। वहाब थोड़ा सा आज उस एनर्जी से भाग नहीं रहे जिस तरह जब वो फुल रिदम में हों और जब वो फुल फिट हों भागते हैं। उनकी बॉल भी हर जो कंसिस्टेंसी है बॉल में वो नज़र नहीं आ रही है। इस बार उठाया, फील्डर पीछे रह गए। तो वहाब रियाज के बारे में आकिब जावेद से हमारी बात हुई थी बहुत बरस पहले, जब ये पाकिस्तान क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। उनका ये कहना था कि ये ऑन ऑफ किस्म के क्रिकेटर हैं, जिस दिन ऑन होंगे आपको बड़े से बड़ा मैच जितवा देंगे, और जिस दिन मामला दूसरा होगा फिर दूसरी टीम को फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल, जैसे अभी एनालिसिस देखें तो बहुत अच्छे एनालिसिस लग रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया इस मैच में। इसे शानदार अंदाज में खेला, इस बार फिर यॉर्कर फेंकना चाहते थे, विद द स्विंग ही खेलने में कामयाब हो गए। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर शर्जील खान अपनी सेंचुरी की जानिब गामजन है। अब बहुत अच्छा शॉट शर्जील खान की तरफ से, और ये बॉल इतना बुरा नहीं था लेकिन इसको प्लेस करने में कामयाब हुए फाइन लेग पे। बहुत इस वक्त आके बैट्समैन ज़ोर से शॉट्स लगाना चाहते हैं तो जिसमें इस तरह के बॉल मिस कर जाते हैं, लेकिन शर्जील का हेड बहुत स्टिल था, आने दिया बॉल को अपनी तरफ और प्लेस कर दिया, यूज़ किया वहाब रियाज की पेस को। 4 फील्डर ऑन साइड में हैं। इस बार भी ये स्टंप से बाहर जा रही थी, इसलिए अंपायर ने इत्तेफाक नहीं किया। वहाब रियाज से 15वां ओवर खत्म हुआ, 134 पर थी। भाई बेटा फर्क है शायद अजय गुंडा चौबीस रन पर एहसान है शर्जील का इस चैंपियनशिप में। ये बेहतरीन स्कोर है, ये बेहतरीन इनिंग्स भी है सिंध की जानिब से टूर्नामेंट की। तो एक और तेज़ बॉलर आ गए हैं जुनेद खान मीडिया सेंटर एंड से। बहुत ज़्यादा ख़राब और शॉर्ट गेंद थी, बहुत वक्त मिल गया हुक करने का एहसान अली को। ओवर की पहली गेंद पर उनने अपनी टीम को बाउंड्री दिलाई। जुनेद अब दबाव में होंगे। बिल्कुल एक्सीलरेटर पे पांव रखते हुए दोनों बैट्समैन, शॉर्ट बॉल की थी और स्लोअर बाउंसर था, लेकिन एहसान अली ने बॉल का वेट किया और फाइन लेग बाउंड्री की तरफ पहुंचा दिया। एक सवाल या मैं आपसे करना चाहता हूं अजहर कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे तेज़ रफ्तार बॉलर कौन सा है? जुनेद खान की अब पहले जैसी रफ्तार नहीं रही। एक और ख़राब गेंद, यॉर्कर फेंकना चाहते थे और बैट्समैन ने डिफ्लेक्ट कर दिया खाली जगह पर। फाइन लेग से भी फाइन 4 रन के लिए। जी 2 लगातार बाउंड्रीज एहसान अली अपने ग्रुप पे आते हुए और बहुत ही
ख़राब गेंद था ये जुनैद खान की तरफ, और जस्ट बल्ला मिलाना था और वही किया एहसान अली ने। इसको एक गिफ्ट कहेंगे तो गलत ना होगा। और आपके सवाल की तरफ मैं वापस आता हूँ। तेज़ बॉलर इस वक्त हमारे पास वसीम शाह की सूरत में मौजूद हैं। वहाब रियाज स्टिल प्लेइंग इन वाइट बॉल क्रिकेट, बोथ तकरीबन राउंड में सेम पेस से बॉल करते हैं। अपनी लाइन को तब्दील किया, यहाँ पर दूसरा रन बनना चाहिए। इफ्तिखार अहमद ने थ्रो फेंका है, पहुँच गया शर्जील खान। अच्छी दौड़ लगाई शर्जील ने, जिन्हें डेंजर एंड की तरफ आना था। जी अच्छी रनिंग इस मरतबा, और इफ्तिखार ने कोशिश की कि शर्जील को रन आउट कर सकें, लेकिन इफ्तिखार थोड़ा सा लेट हो गए। और ये बेहतर लाइन है जुनैद की तरफ से, और जो क्योंकि खूबसूरत इस मरतबा ज़ोरदार अंदाज में खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। हसन अब खुल खेल रहे हैं जुनैद खान की बॉलिंग पर। इस ओवर में उन्होंने ख़राब गेंदों पर 2 चौके लगाए और अब एक बेहतर गेंद पर छक्का लगा दिया। पेट किया बॉल का दोबारा से। बहुत प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं इस ओवर में जुनैद खान, और एहसान अली इस वक्त पूरा सेट हो चुके हैं और शॉर्ट बॉल को बिल्कुल जाने नहीं दे रही, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस बॉल को मिडल किया और बचा दिया इसको मिड विकेट बाउंड्री लाइन से पार। पीसीबी और टक की जानिब से इस छक्के पर 10 दरख्त लगाए जाएंगे। ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा है ये इनिशिएटिव जो टक और पीसीबी ने लिया। ये बहुत महंगा ओवर रहा है। इवन में रन्स बने 4-4, 2-6, अभी 2 गेंदें बाकी हैं इवन में। जी बड़े ओवर की तलाश थी सिंध को, और ये बड़ा ओवर उनको मिला है, और 2 बॉलें भी बाकी हैं। और इसमें 2 रन्स और ऐड हो सकते थे, लेकिन इस बार शर्जील का मूड नहीं था दूसरे रन के लिए मुड़ने में। प्लान थोड़ा चेंज किया है जुनैद खान और रिजवान ने। 2 फील्डर बाउंड्री लाइन ऑफ स्टंप पे ऑफ साइड पे रखे, कवर और एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर। तो आई थिंक लाइन इसकी जुनैद थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ आएंगे अब और यॉर्कर्स करेंगे। स्ट्राइक चेंज होगी, शर्जील खान सामने है अब, और शर्जील चाहेंगे कि ये ओवर एक बाउंड्री से फिनिश करें ताकि 20+ का फिर ये ओवर हो जाए। 15 रन इस ओवर से आए जुनैद खान के। उनका कोटा मुकम्मल हो गया और साथ साथ 16वां ओवर भी 152 पर 3। Five, 2 for 3. 16 overs have been bowled. Partnership looking good. 98 of 65. Sharjeel still out there. 22 short of 100. Important is 50 deliveries phase. That's the pace that you need or you expect out of him. Basit Khan here after quite a few games. I haven't really had the opportunity to sit next to you and learn a few things. So this is my moment, my 4 overs of fame. You've been avoiding me all throughout this morning. Not searching for you, but you've been avoiding me. But well, it was fate that we had to come together. Right now, Sharjeel and Ehsan Ali are doing a fine job together. Last over going for 17, and now left arm spin. Sharjeel will fancy this. He surely does. Big swing of the bat and he finds the gap perfectly, bisects the 2 in the deep on the onside. Big smile on his face as well, gets into the 80s. 100 partnership brought up with that hack to the leg side,
was almost the inside half of the bat, inside edge even. But he packs such a lot of power in the shot that fielders in the deep had no chance. That one can be two here easily. Pushing. Oh, Sharjeel says no. Hassan was very keen on the second. This partnership now 102. This trip has produced scores like 150, 60, almost defendable. So keeping that in mind, Sindh isn't doing that bad after losing 3 quick wickets. Well, one. down the wicket and smashes for a single. It's very tough to actually impress Bazid Khan. Whether it is a performance of an individual or a team effort. The KP have one thing in their favour, that they won't be sharp. Well, a single will be taken when the ball's gone to the fence. We saw a couple of balls earlier where they've missed out on a couple of runs, so that option is closed, but the power of Sharjeel is still there. And he can deal in maximums whenever he likes. Yeah, this was to be hit. It was low, no turn on it. All he had to do is do what he does best. Swing hard at it and get the maximum out. Yeah, once he can do that, no need to run hard or come back for the second, because he can, well, I don't like saying catch up because the ball is gone, the previous ball is gone, you can't never catch up, but he can up the ante when he likes. Full toss just hit down the ground, maybe another opportunity for Sharjeel. He's gone to 90 now. Already had 100 in this tournament. Sharjeel looks well set to get the second 100 of the tournament. First 100 was Abdullah Shafiq. This time it's Hassan. May not go all the way. That lands right into the hands of the fielder in the deep. That's Iftikhar, if I'm not wrong. Well, that's the partnership broken by KP here. Yeah, Hassan didn't get the power. Nicely bowled by Asif Afridi into the pitch. He knows that he doesn't want to go full. Iftikhar, well, he didn't judge it perfectly at first, but was very comfortable once he got underneath that. It's a good catch, but a good little innings from Ehsan Ali. Comes to a close. It's out for 42. It's 165 for 4. Anwar Ali walks out. I was just about to say when we were reading the partnership that this is the platform stage where Anwar Ali would do a lot of good to the side's total. So not taking anything away from Ehsan, but blessing in disguise. This is the moment with around 3.5 overs to go. If you can get Anwar Ali firing all cylinders, got a 30 odd in just 17 deliveries last night. Then Sindh is off to somewhere in the 180s and 90s. At 3 overs, they'll be looking at 300, really. 3 overs, 35 maybe. But Shaheen Shah Afridi back in the attack. And that's down the leg side as an appeal, but the umpire's not interested. Faisal Afridi just says that maybe it's just nicked the pad on its way. This is what Shaheen Shah Afridi will do, get the ball to dart back in, yes, off the pad. Inquiry. A dot ball. That's
a wild swing, a slog right through him, and that's the end. In the 90s, was just 10 away, but Shaheen's day today. He gets his third. Afridi has been the most prolific bowler in T20s this year. That's his 35th wicket. And I imagine a lot of those have come as bowled. Hits the stumps for fun. Fantastic innings by Sharjeel. He goes back for 90, but Shaheen Afridi getting him out. 6 sixes in his 56 ball 90. Danish Aziz, the new batsman for Sindh, left-handed. Got a couple of deliveries to face yesterday. He did hit a 6 and a boundary, so he scored around 12. Now, two new batsmen who yet to face a delivery are on the crease. Things can go either way. Can Sindh extract the most out of the remaining overs, or can this be the moment where KP capitalizes and changes the course? Luxury KP have is that Shaheen and Wahab can close this innings out. Shaheen Afridi has been brilliant in white ball cricket and T20 cricket. 35 wickets and 18 of them have been bowled, so we know that he bowls very straight. He knows that at the back end he'll bowl those Yorkers. If there's a little bit of reverse, he's going to be very difficult to get away. So whereas you would think that it'll be easy to get to 200, but the quality of bowling that they'll face in these last overs, it'll take some doing. Round the wicket is probably a good idea to Anwar. He really likes to free his arms. He gets two. The ball tailing back inside edge, smashes into the stumps. Sarfaraz wanted to bat first today, and he got that. KP won the toss, decided to field first. It was sort of a hiccup start for Sindh. They lost Khurram Manzoor early, and then Azam Khan and Sarfaraz himself couldn't stick around. The big partnership was Ehsan Ali and Sharjeel that got them the score going. Just 5 off that 18th over big wicket of Sharjeel, 169 for 5. That's what I was just mentioning, that Sharjeel and Ehsan put in the bulk of the scoring. Couldn't get amongst runs today. Brilliant Yorker that he got from Shaheen. And then Azam Khan, of course, tricked by him with a slower delivery. Nicely done. Smash to the offside. Zada Farhan did extremely well because I quickly went to him, to his right. So little attention to detail, as I call it, little pieces of fielding in the field and little occasions where you stop a run or you don't go for the second run. It does come and haunt you. We've seen that in previous games.
Some tries going down the ground or just manages to evade the cover fielder. Couple of runs for Anwar Ali. Yeah, KP bowlers on the money. They're not allowing any room to these batsmen. They're bowling good yorkers, both Shaheen and Wahab Riaz. And you need any two bowlers to wrap it up for your side. These would be the best choice by any team. Sindh would still like to fancy their chances in the remaining 10 deliveries and get to 190s. Coming back for the second, they should be tied. It's a good throw. But did that dive? Did that dive save Anwar? He was slightly hesitating in turning around for the second, and then he went top gear. Just touch and go, I suppose. The bounce takes the ball a little wider. Yeah, this is good. The dive works. Yeah, good running, good intent from Anwar Ali. And made sure that he used all the extension with the dive and with the bat sliding in. Does well. It's an extra run and keeps himself safe. That's how it works with some good fielders or ones who can run well between the wickets. You get the extra yard. See the official call. It will be not out. Extra spinner today, added in Sindh squad. Hassan Khan back in the 11, leaving out Hasnain. We'll come back to that. So one inside edge and that'll race away to the fence. Lucky boundary, much needed boundary, but they all count. Yeah, it's just so frustrating, isn't it, as a bowler? You get in the right area and the ball just clips any part of the bat and gets into the vacant zone. Nothing the keeper or the short fine leg can do about it. Oh, he hit that hard. We'll find the fielder. This is a used pitch, Sikandar. This was used for the second day of this National T20 Cup. And in the first game we played, then they got 180. Sindh have already got 180 and they... Balochistan got 180. They won by 2 runs. Right now, Anwar Ali coming back for the second. This is excellent. Excellent running by Anwar Ali, pushing his partner to make sure that he comes for the second. 19 gone. It's 182 for 5. On 3 occasions in the previous over, Anwar pushed his partner to come back for 2, and he got it. That's the extra bit that you can add with a good runner between the wickets. And then a boundary. So he's got some good runs. Well, Afridi's been excellent as always. He's just been the go-to bowler. He was very full. All his wickets.
deliveries which are very, very full. This one inside edge onto the stumps. And again, he's got 3 for 20, and again, this final over, he starts off with a dot ball. He's been Pakistan's best bowler in all 3 formats, but in T20 he's got the most wickets all around the globe, and also he's already got a 5er in this tournament. Got 6 wickets for Hampshire, where he got 6 bowls. So he knows exactly what he's doing, and this is his 4th one today. Another wicket. Shaheen Shah Afridi just too good. Yeah, probably the bat just rotates in his hand, doesn't get any power behind it. Gets caught just at the edge of the circle. He won't be questioned for this, because this is what's required to go for those big hits. Anwar Ali goes for 12, and it is now 182 for 6. One big hitter after another. Sohail Khan was itching to come out yesterday and show what talent he's got with the bat. Today he has got 4 deliveries, but he's on the non-strikers. Such good form. The other day he got a 5-wicket haul. Started off with a short ball and then an absolute peach, hitting the stumps. And when he comes back in the second spell, it's Yorkers more often than not, and makes him so difficult with the angle from round the wicket. The ball low, full toss even. It's a challenge to get him away. And that's why he's been so successful, not just in this tournament, but in T20s overall. And you couldn't ask for a better 20th over. He started off with a dot ball, then a wicket, a single off, so just 1 run so far of the first 3 deliveries. And a wicket. Just 1 run off the first 4 deliveries, and it is the 20th over. I know exactly what he's going to do, but it's difficult to get him away even then. There you go, another one, a swing and a miss. This is absolutely brilliant bowling. Such class. Is getting the ball to reverse slightly, but in any sort of T20 game, you bowl the 20th over and you don't go for a boundary, that's exceptional. But if you're not even going at 1 per ball, it is absolutely outstanding. And these are valuable dot balls at this stage. 6 dots that he's bowled in his almost 4 overs. This stage of the game, extremely valuable. Right through, gets another 5er. Sohail Khan is bowled, and that wraps up Sindh's innings in their 20 overs. They manage only 183. Credit goes to this man on your screen. What a performance, how he's wrapped up when he's come back into the attack. Brilliantly done. 3rd 5-wicket haul in 5 games, so you can imagine what kind of form he is in. Again the Yorker, again bullseye, and absolutely fantastic. 183 runs scored. Sohail Khan didn't get any, but out of that, a 5-wicket haul for Shaheen Shah Afridi. So
after putting Sindh into bat, I think KP would be happy how they've wrapped up this innings. And looking at 183, the total of 4-7 in 20 overs, they'll take that. They've got a lot of batting available to them, experience, youngsters, they're perfectly balanced, they're looking good in the points table as well. So let's have a look at how the batting went. Khurram Manzoor was early to be dismissed, bowled by Shaheen Afridi. Sharjeel got a brilliant 90 of 56. Azam Khan couldn't be amongst runs, so couldn't Sarfaraz. Ahsan Ali had a good partnership with Sharjeel Khan, that's the bulk of the scoring. And then later on, Anwar Ali, Danish Aziz, Sohail Khan couldn't get into that firing mode that they're known for. 183 for 7. Bowling now. Well, the only performance to talk about, or the greatest performance of this game, is Shaheen Shah Afridi. 4 overs, 5 for 21. He's made a habit of taking 5 wickets. 184 needed now, the target, and we'll be back with that chase. Game, so first 20 overs done of the game, and after KP won the toss, they elected to bowl. Started off with Khurram Manzoor getting after both Shaheen Shah Afridi and Hafiz, but Shaheen Shah with an exceptional Yorker. He's been absolutely phenomenal. Won T20 cricket. Sharjeel
looked the part, looked as if he gave himself enough time to hit these boundaries. Shaheen Shah Afridi then again with the slow one, dismissed Azam Khan. That was a big wicket. Shajil on the other hand starting to look really dangerous and hitting those big hits. Wahab came in, dismissed Sarfaraz. Then came in Ehsan Ali. Big partnership between Sharjeel and Ehsan Ali. Sharjeel, we know, so powerful. Massive hits from him. Swing to the leg is a big partnership. And Sharjeel dominated with hits down the ground. It's the opportunity which Wahab let go of. And that meant that Ehsan Ali and Sharjeel went on merrily with some lusty blows to the leg side. Sharjeel hitting the ball out of the ground quite a number of times. Asif Afridi got rid of Ehsan Ali. Huge partnership. And then came back Shaheen Shah Afridi. And nobody's getting after him in this sort of form. Inside edge rolled down to fine leg for a boundary, but back end Shaheen Shah Afridi proved priceless. He bowled beautifully. Didn't give any sort of runs away and ended up with another 5-wicket haul. That meant that Sindh got 183 of their 20 overs, and KP will have to chase the target down of 184, and we'll be back with that in a short while. Good afternoon from Multan. The sun setting here, and the target also set up 184 to win this match in the allotted 20 for KP, who decided to field first. The umpires are out. It's a quick turnaround. That's how T20s go. So the national T20 just shaping up very nicely. We've got a good understanding of the squads out here, the 6 teams, how they're playing, with the Northern leading 4 out of 4, Southern Punjab losing 4 out of 4. And the rest of the teams in the middle are just competing with each other. Every passing day changes their position. Sindh has got a good opportunity, though you'd probably say that in the end they couldn't really capitalize on those big hits and try to get those extra 15 runs. But they still feel that this trip we saw on the second day of the tournament produced 180. They've got themselves 3 more. So 184. Sarfaraz knows exactly how to utilize the resources. He's got options available. KP, on the other hand, if you compare the two sides, are more settled in the tournament up till now. 2 victories out of 3 games that they've played. Marina joins me. Could be a good contest. A lot depends on how KP starts in the power play, especially the in-form
batters that they have, the batsman Rizwan, the captain, and so on. Sindh wanted to bat first, posted some total, and courtesy Shaheen Afridi, he wrapped things up for Sindh pretty quickly. But yeah, if you talk about the white batting lineup, they've got some good all-round cricketers who can play big shots, rotate strikes. They're pretty confident out there. Defended 180, and then again, if they won't, they can chase it down again. Fakhar Zaman and Mohammad Rizwan, the two openers. It'll be important for Sindh to get rid of Fakhar because he can get off to a flying start and make it easier for the batsman to come. Get him quick, you stay in the game. There he is, the left-handed batsman. Opens for Pakistan as well. Loves to go after the bowling, especially in the power play. That's the brand of cricket he plays. Just like Sharjeel or all the hard hitters around the world. Rizwan has been very impressive. He's promoted himself up in the order. He's looked comfortable in this opening slot. He's made good use of the number of overs available to him. And he's added valuable scores. He's worked hard on his power hitting. So he's learned the art of how to clear the circle in the power play. Sohail Khan, this again I would say a good contest. He's been one of the pick of the bowlers for Sindh. He's mixed it up well. He's bowled smartly. Yesterday the power play bowling wasn't very impressive from Sindh, so they don't want to repeat that. The two men, deep square leg and deep point. And the umpire says play. Sohail Khan to Fakhar Zaman, a slip in position. Run straight away down to third man region, and that'll be a boundary. No chance for Ehsan to cut it off from deep point. Slight touch of width and beautifully guided down the third man boundary. He's off with the boundary. Fakhar Zaman needs to score a big innings. His team needs him out there. But yeah, Sindh again, they need wickets up front if they want to defend this total. Got to take a leaf out of how Shaheen Afridi bowled. He targeted the stumps and he was rewarded with 5 wickets. He bowled smartly, good length. So as a bowler, you need to keep in mind that you bowl into the stumps, especially to someone like Fakhar who likes width. Look at that. He practices that on and off. The shadow practicing. So keep it in the stumps, cramp him for space. That's the line we're talking about. You miss, I hit kind of a line. Fakhar Zaman is really strong, square of the wicket. We've seen some decline in his feet movement. He relies on width and on hands. Even at that moment, if you look at it, the front foot was planted. But yeah, managed good. So it would be a good line to bowl to him within stumps. Good length right now with slip in place. Don't give him any width on either side of the wicket. He's got that slip for Rizwan as well. Good running once again. That can be quite frustrating for the bowler when the runs start coming in singles in the circle. And since everyone is right at the edge, you play soft hands and you can easily scamper for a single. He's a busy cricketer, Rizwan. Intelligent one, knows his field, knows his strength, as well as he works on the bowler. Can hit big.
but more importantly, he rotates. There you go once again. Another shy at Stubbs. Sarfaraz isn't very impressed. He's not impressed. I think the fielders within the circle, especially at this point, they should watch the bat. But right now we'll watch beautiful view of Multan right in the middle of the stadium. I think one of the best in Pakistan, and a great shot to look at. End of the over, 7 for none. Lovely view. Bit hazy out there, but that's the time of the year when the weather is now changing in the country. You start feeling a bit of chill in the evenings, but not really here. But if you go up north, probably the second leg of the tournament when you get to Rawalpindi. But that's also a bit of sign that probably you'll get some dew coming up. We've basically seen how dew has played its role. It comes only somewhere around after 8 in the evening, so you're safe in the first half of the second game. It's taking some time now. Asghar is back in the 11, so he gets to bowl now. I'm sorry, he was always there in the 11. He never got the new ball yesterday, so he's got the new ball today. Sarfaraz wouldn't mind these singles coming in, only if the circle players can stop those. That will be brilliant. But yeah, they don't want to have KP going off to a flying start and things getting out of control here. Sun's just setting down, the shadows lengthening. Sarfaraz taking his time with the field. He wants to get the fielders right way, on the right spot, and the right fielders actually. 5-4 field here for Rizwan. It's never easy with a batting pair out there like Rizwan and Fakhr. Fakhr likes to go big. Then Rizwan, on the other hand, likes to rotate some soft touches, singles. Almost yorked him on that occasion, Asghar. It's like dipping right into him. He likes to bowl with some pace. Skids it on. Got that action, not much toss, but a flatter trajectory, always handy for a spinner with the new ball. Gives the charge, gets hold of it, and plays it wide of that fielder. Not too wide, slightly wide. Anwar cannot cut it off. Flight was there. He took the invitation, Fakhr Zaman. Heaved it, gave just enough room, cleared that leg, and up it goes for the boundary. That's what he was looking for. Only one. Very well bowled. Seven of the over till now. Still one ball to go.
Got to keep an eye on that required run rate from the beginning. Things seem to get a bit tough later on. Sides seem to struggle. We've seen games getting so close, but the sides chasing haven't really been able to cross that finishing line. Oh, that's very unlike him. Cross the line and against the spin. End of the over, 14 for none. Multan known to be the city of shrines and also known for a lot of good food and lots of traffic as well. And here is an aerial view. The ground is not really in the city center, but now the construction has really expanded. Change in bowling now, coming in from the commentary end. So they've taken Sohail Khan off and Mir Hamza, the left arm quick, comes in. Good line to start off, Mir Hamza. Right onto the stumps, good length, not allowing Fakhr the width he wants. Sindh seems to have a plan against KP. They need wickets still because they got some really exciting players coming up. That's quick thinking. Just keeping an eye on the foot movement of the batsman and just following him with a Yorker. That's well done by Mir Hamza. It's a bit typical from Fakhr. Whenever he's seen strap, he likes to shimmy down the wicket, take on the fast bowlers. But spot on by Mir Hamza this time. This time Rizwan comes down. Only earn him a single there. Sindh's doing well up till now of what we've seen. Keeping it nice and tight. This is the KP dugout. Abdul Razak there to the left of your screen on the bench, their head coach. Third man being brought in and long on being pushed back. Good call that from Rizwan. Sarfaraz is really far behind the stumps. Brilliant running by the skipper. We've seen in this tournament, most of the captains have taken responsibility, moved up the order. I think it obviously helps you to grow and gives a solid confidence to the team as well. You're leading from the front, performing for your team and yourself, obviously. So far, they all have succeeded. Just get some bat on it at the last moment. Sarfaraz couldn't do much about it. The line was wrong, and immediately the batsman pounces on that and gets a boundary. Wild swing from Rizwan. He wanted to smash it for the boundary. Did get one way or the other, but yeah, not a good line. It's difficult for a left-hander to bowl to a righty, but yet again, it's professional cricket. He's been pretty good, Mir Hamza.
That's better line to end the over. It's 21 for none after 3. Sort of a quiet start from KP, 21 for none. We haven't seen those boundaries one after another, or any, well, no maximum as yet. Anwar Ali now comes in. That's the way, which is quite surprising yesterday how Sarfaraz was bowling his bowlers. He bowled Mir Hamza back-to-back 2 overs. He made Sohail Khan bowl as well. He never bowled a spinner in the power play, and today he's being himself. An over apiece, Sohail Khan, Asghar, Mir Hamza, and now Anwar Ali. Ample talent, Anwar Ali. He's been a performer for Pakistan, even at international stage, in domestic and PSL. He knows his game. He knows where to bowl at the right moment. And obviously not allowing batters to settle in, change of bowlers is really important. Again, Sindh seems to be sorted out today. Light misfield, good run taken. Wanted to pierce that gap, but we've got a ring of fielders on the offside. Rizwan and Fakhr, steady proceedings, but they need to take a sneak at the required run rate. Well, they've got Hafiz, Shoaib and Iftikhar, prolific batters coming in, but they need to move on. It's not the first time that these two KP batsmen have managed to sneak a single inside the circle. It's just that how controlled their shot has been. They know exactly how hard they've played it towards the fielder, just allowing them to easily work their way around for a single. And then choosing the fielders as well. This time it was Azam. He's good. Mind you, he can cover good ground. Loves to dive. He's lucky that didn't go for a boundary. The idea was right. Just quickly saw Rizwan making room. He followed him. A little too much on the leg. Yeah, good ball from Anwar Ali, showing all his experience, but would be disappointed. Needed to have few steps away from that fielder and would have been a boundary. The much needed boundary for KP. Still looking to score big runs. He's got him. It was slightly slower one, and Rizwan trying to make room, just chops it onto the stumps. That's a big blow, big wicket for an informed batsman going out. It's just that silence with no boundaries. Just rolled his fingers over the seam like a leg cutter, and he's got his man. Chipped on. Rizwan again missed out on the missed boundary on the last ball. Wanted to capitalize it, couldn't make it, and Anwar Ali strikes for Sindh. Gone for 8, Rizwan.
in form. Number 3 for KP, Mohammad Hafiz. Integral part of the squad with the ball in the field. Some very good catches, and now responsibility on him with the bat. And he hasn't disappointed KP up till now. So he comes out with plenty of overs available to him. Coming back to the wicket of Mohammad Rizwan. Again, trying to go over the offside. And right on bullseye, Anwar Ali. Slow one. Didn't have the pace on it, chipped on. Anwar Ali strikes. That's what you need, that's what Sindh need. Most experienced bowler coming in, giving the breakthrough, and the steady proceedings for Rizwan were over. He's been in immaculate form, Hafiz. The mindset he has been reflected in his batting. We were having a talk that maybe playing one format helps you to focus more. But he did have the talent always. Do you believe that obviously focusing on one format and you know that you need to be the performer in that game makes a difference? Well, it could always be good if you're only playing one format. You just focus on that, but you got to... If you've got the ability, yes, then why not? If you're playing a series with all 3 formats, yeah, that might be touch difficult to change your mode. Brilliant over, just 3 of it and a wicket. 24 for 1 after 4. मुल्तान में अब दिन डूब रहा है और मुकाबला बहुत ज़बरदस्त हो गया है। रिजवान जो इन फॉर्म थे उनसे छुटकारा हासिल कर लिया अनवर अली ने अपने पहले ही ओवर में। पहले 4 ओवर्स में 4 बॉलर्स को आजमाया कप्तान सरफराज अहमद ने। रिजवान जिन्होंने पिछले 2 मैचों में मुसलसल निस्फ सेंचुरियाँ बनाई थी, इस मरतबा स्कोरर्स को बहुत ज़्यादा जहमत नहीं दी अजहर। बिल्कुल, और सिंध सरफराज और पूरी टीम बड़ी खुश होगी उनके जिस तरीके से उन्होंने उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की है। बहुत जारहाना बैटिंग के लिए जाने जाते हैं फ़खर जमान, लेकिन अभी तक ज़्यादा तेज़ी से रन्स बनाने में कामयाब नहीं हो सके। मीर हमजा पिछले मैच में पावर प्ले में खातिर ख्वाह को अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके थे। 69 रन दिए थे सिंध के बॉलर्स ने 6 ओवर्स में नॉर्दर्न के खिलाफ। और स्मैश किया इसे, और ये फ्लैट छक्का, सनसनीखेज बैटिंग का मुजाहरा फ़खर जमान की जानिब से। बिल्कुल, और ये शॉट मुतवक्के था फ़खर जमान से और बहुत ही अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया और बहुत ही फ्लैट छक्का हुआ ये, जिसको कहते हैं ज़रा सा बाउंड्री के लाइन से बाहर गिरा जाके, और बहुत ही अच्छा इसको मिडल किया इस बॉल को। फैसल आफरीदी का इशारा आ गया, तस्दीक कर दी उन्होंने फ़खर जमान के छक्के की। फ्लड लाइट्स अब रोशन हो रही हैं, दिन की भी अभी रोशनी है। 2 रोशनियों में कभी कभार फास्ट बॉलर को खेलना आसान नहीं होता अजहर, लेकिन ये क्योंकि ऑफ द विकेट कुछ मदद नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए। बिल्कुल, अभी तक सिंध के बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, क्योंकि विकेट की
क्योंकि स्लो है, बैटिंग के लिए बहुत साजगार है, इसलिए विकेट टू विकेट लाइन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फ़खर ज़मान को अपने कदम जो हैं वो यूज़ करने पड़े। जी हाँ, ताकि वो अपनी एनर्जी जो है वो क्रिएट कर सकें। T20 में अक्सर ये करना पड़ता है बैट्समैन को, कई बार बाहर निकलकर बैट स्पीड के ज़रिए। एक और शानदार शॉट, इस बार बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की, इंतज़ार किया गेंद का और लेट कट कर दिया आज़म खान और विकेट कीपर कप्तान सरफराज अहमद के दरमियान से। थोड़ी सी लाइन चूकी, ज़्यादा बाहर नहीं था बॉल, लेकिन फ़खर ज़मान ने अपनी जो फ्रंट लेग है उसको क्लियर रखा होता है, तो उनको रूम मिला, रूम बनाने में कामयाब रहे और जस्ट प्लेस किया उसको थर्ड मैन की जानिब और एक आसान बाउंड्री हासिल की। खतरनाक गिराते लगते हैं फ़खर ज़मान के। आज शर्जील खान ने भी अच्छी बैटिंग की है, उसका जवाब देना होगा फ़खर ज़मान को अगर उनकी टीम 2 पॉइंट्स हासिल करना चाहती। फ़खर ज़मान ऐसा लगता है, अज़हर आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, कि इन्होंने अपना जो बैटिंग स्टांस है और जो गार्ड की पोजीशन है ये तब्दील की है हालिया दिनों में। जी बिल्कुल, थोड़ा सा काम किया है कोचेस के साथ मिलके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉल से अवे हो जाते थे ये और लेग स्टम्प से तीनों स्टम्प्स इनके नज़र आ रहे होते थे, तो अब इन्होंने कोशिश की है स्पेशली वाइट बॉल जो वनडे क्रिकेट है और 4 डे क्रिकेट है, और काफ़ी ये बीच में आए हैं, मिडिल स्टम्प पे ऑलमोस्ट आए हैं, ताकि इनको अपनी ऑफ स्टम्प का भी पता हो और बॉल के करीब जा सकें। और इनकी बैटिंग में काफ़ी बेहतरी आई है, उसके बाद से इन्होंने जितनी वहाँ पे प्रैक्टिस गेम्स हुई, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की इन्होंने। ये वाइड गेंद विकेट कीपर तक सही तरह पहुंची भी नहीं। वो जो दबाव कायम किया था पहले 4 ओवर्स में, वो इस ओवर में लगता है कि ढीली ढाली बॉलिंग की वजह से वो दबाव कम होने लगा है। जो इंग्लैंड के टूर पे फ़खर ज़मान को काम करने का मौका मिला कोचेस के साथ, क्योंकि एक बबल एक लिहाज से टफ ज़रूर था, लेकिन हमारे सब प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी थी कि कोचेस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपनी गेम के ऊपर काम करें, तो वही आई थिंक किया इन लोगों ने। फ्लिक किया, फील्डर हैं और कैच गिरा दिया। सिंध की आउटफील्डिंग का म्यार इतना ज़्यादा बुलंद नहीं है, ये एहसान अली थे। तीसरा कैच छोड़ा है इन्होंने इस टूर्नामेंट में आउटफील्ड में। इस तरह के कैचेस लेने पड़ेंगे सिंध को। अच्छी एफर्ट थी, लेकिन T20 क्रिकेट में ही ऐसे कैचेस लेने पड़ते हैं और चूक गए एहसान अली। 5 ओवर्स मुकम्मल हुए, 39 पर 1। पावर प्ले का आखिरी ओवर अब फेंका जाने वाला है और सामने वाले एंड से सुहेल खान बॉलिंग करेंगे। सिंध के मायानाज बॉलर हैं। हाल ही में ये अज़हर अली के साथ थे इंग्लैंड के दौरे पर। एक मौके पर लगता था कि शायद टेस्ट मैच खेल जाएंगे। 5 विकेटें भी हासिल की थी वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस मैच में। फिटनेस उनकी पहले से बेहतर लगती है, अच्छे रिदम में भी लगे हैं अज़हर जी। फिटनेस ऑब्वियसली इम्प्रूव कर रहे हैं और जहाँ तक इंग्लैंड का दौरा रहा और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई वहाँ पे। 4 महीने 5 महीने लॉकडाउन के बाद आसान नहीं था फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन 3 से 4 हफ्ते में सुहेल खान ने अपने आप को रेडी किया और
एक टाइम पे लग रहा था कि वो टेस्ट मैचेस में हिस्सा लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं बन सकी। इसे खेला लेग साइड में, एक रन के लिए असगर ने जाकर गेंद को पिक किया। ये पहले पहल काफ़ी तेज़ बॉलिंग करते थे पाकिस्तान में, जो सर्किट के तेज़ बॉलर्स थे उनमें शुमार होते थे। अच्छा उनका गेंद सीम पर पड़ता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी रफ्तार पर कदरे समझौता किया, गेंद को स्विंग करना शुरू किया। बिल्कुल एक मुख्तलिफ बॉलर लगते हैं अब। बिल्कुल वक्त के साथ साथ आपको अडेप्ट करना पड़ता है, और एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी है और काफ़ी काम करते हैं अपने बॉलिंग के ऊपर। इस बार अच्छी विकेट कीपिंग की सरफराज अहमद ने, इतनी अच्छी गेंद नहीं थी, लकी रहे इस बार सुहेल। जी बिल्कुल खुशकिस्मती सुहेल खान की कि ये बॉल बाउंड्री लाइन पे नहीं जा सका। लेग साइड पे बॉल थी और फाइन लेग भी ऊपर थी, कनेक्ट नहीं कर पाए सही तरीके से फखर जमान, और अच्छा स्टॉप सरफराज की तरफ से। सरफराज अहमद ने कप्तानी के फ़राइज़ बड़ी खुशउस्लूबी के साथ अंजाम दिए हैं इस चैम्पियनशिप में। इस बार ये मौका था जो गंवा दिया, एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश की। ये फील्डर मिड ऑन पोजीशन पर थे, उन्होंने संगीन गलती की। इस मरतबा ऐसा लगता है कि असगर थे। टाइम नहीं कर सके अपने जंप को, और मोहम्मद हफीज़ जैसे प्ले इन फॉर्म बैट्समैन के कैचेस जो हैं वो ड्रॉप करना बहुत मुश्किलात दरपेश कर सकते हैं हफीज़ सिंध के लिए। हम सरफराज अहमद की कप्तानी की बात कर रहे थे। सरफराज और शादाब खान ये दो स्टैंड आउट कैप्टन्स हैं। टीम स्पिरिट के मामले में सबसे अच्छी टीम नॉर्दर्न ही अब तक साबित हुई है। शादाब ने अपने तमाम खिलाड़ियों को हर वक्त अच्छी एनर्जी उनके यहाँ नज़र आती है, खुद भी एनर्जेटिक क्रिकेटर हैं और उनके पास वसाइल भी हैं। इतने ज़्यादा बॉलिंग के ज़्यादा वसाइल नहीं हैं या अगर हम सरफराज से मुवाजना करते हैं, लेकिन अपनी फील्ड पोजीशन अच्छी रखते हैं, बॉलिंग में तब्दीलियाँ बर वक्त करते हैं सरफराज अहमद। पावर प्ले यहाँ पे ख़त्म हुआ और 6 ओवर के बाद 43 पे 1। दानिश पावर प्ले ख़त्म होते ही यहाँ पर लाने का फैसला किया गया हसन खान को, जो टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं। देखिए शफक की सुर्खी अब आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी है हमारे दाएं जानिब उफक में। ये बड़ा दिलकश मंजर होता है जब जब शाम ढलती है। आपने काफ़ी रोमांटिक माहौल कर दिया। T20 रोमांटिक गेम है। हसन खान ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अच्छी बैटिंग भी करते हैं। बैटिंग के तो ज़्यादा मौके मिल नहीं रहे। पिछले मैच में उन्होंने मुतासर किया था। फखर जमान ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते जब स्पिनर आते हैं बॉलिंग करने के लिए। वही कदमों का इस्तेमाल किया, विप किया गेंद को सामने की जानिब। बस फ़खर जमान अगेंस्ट द स्पिन ना जाएं, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त हिट ये लगाते हैं सामने की जानिब, मिड विकेट की जानिब लेफ्ट आर्म स्पिनर को। और लेग साइड पे इतने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कई दफ़ा मैंने देखा है कि वो अगेंस्ट द स्पिन खेलने चले जाते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को, कई दफ़ा आउट होते देखा है। तो
जिस तरीके से आज शर्जील ने लेग साइड की तरफ छक्के लगाए, और यही एक्सपेक्ट केपीके के डगआउट भी यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इसी तरह के छक्के देखने को मिलेंगे फ़खर जमान की जानिब से। साइड स्क्रीन की पोजीशन को अब तब्दील किया गया, राउंड द विकेट। ये बॉलिंग करेंगे हसन हफीज़ को। मुनीर नियाजी एक इस इलाके के बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं। वो कहते थे कि हमेशा देर कर देता हूँ, लेकिन ये फ़खर जमान हमेशा जल्दी कर देते हैं स्पिनर के मामले में। जो ही देखते हैं स्पिनर को, वेरी वेल बॉल्ड, वेरी वेल बॉल्ड, वेरी वेल बॉल्ड। हिट लगाना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, कनेक्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल जल्दी समटाइम करते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी सेट हो चुके हैं, और मेरे ख्याल में अब वो कोशिश उनकी यही होगी कि बाउंड्रीज हासिल की जाए और हफीज़ के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर ऑफ किया जाए, क्योंकि काफ़ी डेंजरसली खेल रहे हैं इस वक्त। नहायत शानदार शॉट, इस बार क्रीज के बाहर आते हुए हमलावर हुए मोहम्मद हफीज़, दिल का चौका लगाया। ये क्रिकेटिंग शॉट था। बिल्कुल हफीज़ जब से आए हैं बॉल को सही तरह टाइम नहीं कर पा रहे, लेकिन इस वक्त इस दफ़ा कनेक्ट करने में कामयाब हुए, और बॉलर के सर के ऊपर से ज़ोरदार शॉट लगाया 4 रन के लिए, और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल हुए केपीके के। स्पिनर का इम्तहान रहेगा हफीज़ के सामने। दूसरा रन लेना चाहते थे फ़खर जमान, लेकिन उसका मौका नहीं दिया। अनवर अली सिंध के बेहतरीन फील्डर हैं। 7 ओवर्स के बाद 51 पर 1। एक 133 रन दरकार हैं खैबर पख्तूनख्वा को इस चैंपियनशिप में अपना तीसरा मैच जीतने के लिए मुतवातिर, लेकिन आज इतना आसान नहीं है उनके लिए। सिंध भी अच्छी टीम है, T20 क्रिकेट खेलना ये जानते हैं सरफराज अहमद और उनके साथी, लेकिन ये पार्टनरशिप वाइटल है, खासतौर पर मोहम्मद हफीज़ को मान लेना होगा। बिल्कुल, और रन रेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हुए, और 10 रन से प्लस का रन रेट केपीके को रिक्वायर्ड है, और हफीज़ अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए क्रीज पे। लास्ट ओवर में एक बाउंड्री लगाई, उससे उनके नर्व्स काफ़ी सेटल हुए होंगे। अच्छा प्लेस किया, और दूसरे रन के लिए भी पलट आए मोहम्मद हफीज़। यही मसला है सरफराज अहमद को अपने आउटफील्डर से, वो इतने फुर्तीले नहीं हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है कप्तान के लिए, इतने सारे फील्डर्स को एडजस्ट करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि मेरे अच्छे फील्डर्स कहाँ पे हैं। ये इस साल मोहम्मद हफीज़ का 588वां T20 रन था। बाबर आजम 706 रन के साथ सिर्फ इनसे आगे हैं पाकिस्तान में। क्या मुख्तलिफ किया है हफीज़ ने, इनका बल्ला रन उगलने लगा है इन दिनों। बिल्कुल, मोहम्मद हफीज़ एक स्ट्रॉन्ग, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, और क्वालिटी तो आपको पता है, इतने अरसे से पाकिस्तान से खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन मेंटली बहुत टफ है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इनकी। या क्योंकि ऐसा कम होता है कि आपकी उम्र बढ़ रही हो और आपकी कारकर्दगी का म्यार भी बढ़ रहा हो। डेज़मंड हेन्स, इमरान खान, मिसबाह उल हक, ये मैंने चंद एक ऐसे क्रिकेटर देखे हैं, चंद एक ऐसे बैट्समैन जो जिनकी उम्र बढ़ी, उनकी बैटिंग में कारकर्दगी बढ़ती चली गई,
वगरना इसके बरक्स होता है आमतौर पे। हफीज आते हैं इस, ये जो नाम मैंने गिने इस फहरिस्त में। बिल्कुल, आप एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत कुछ सीखते हैं, और सीखने के साथ साथ अगर आपकी फिटनेस हो, और अगर आप 38, 39 या 40 इयर्स की एज में अगर आप फिट हैं, तो आपको नॉलेज ऑफ द गेम तो बहुत ज़्यादा होता है, और आप ऑलमोस्ट पढ़ पाते हैं बॉलर को कि कैसे बॉलिंग करेगा आपके अगेंस्ट। तो अगर आप फिट हों और आपकी आई साइड अच्छी हो, तो वो बेस्ट टाइम होता है आपकी क्रिकेट का। चार किया मोहम्मद हफीज ने, और ये फलक शिगाफ छक्का हफीज का लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर। 10 दरख्त जो हैं वो मजीद लगेंगे पीसीबी और टक की जानिब से। 8 ओवर्स मुकम्मल हुए, 63 पर 1। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट, स्लो और बाहर बॉल किया था, लेकिन हफीज़ ने बॉल का वेट किया और बहुत ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश नहीं की, और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार छक्का। 8 ओवर के बाद 63 पे 1। चलो आसान, शाबाश शाबाश शाबाश। सही है, शाबाश शाबाश। खुद पकड़। ये बहुत है, बहुत है। He's in the last over, just finding his timing. And those 2 drop catches come and bite Sindh. आराम से, only one. आराम से। Spinners operating, and Hafiz plays spin extremely well. He senses the opportunity to go downtown. 120 still required. Yes, Bazit, costly mistakes by Sindh's fielders. That's the way he's going to attack. He's going to hit down the ground. That's Hafiz's strength. Surprise letting the bowler know, just watch out for that big hit. जल्दी आ दानिश, मेरे पास आ। दानिश बॉलर, ब्रेक बॉलर। It was very full. Hassan does know that they're going to attack every delivery, so need to think on their feet as well. Yes, Hassan is not trying to give any room to Fakhar Zaman, bowling from around the wicket, trying to dart it to his pads. Short and hammered out off the ground. Easy pickings for Mohammad Hafiz. Once again, another inning where Hafiz is just blasting off. It was a good over so far, but he just pitched it too short. Ball from behind the crease, the popping line, and all Hafiz had to do was just pick it up. One of the best timers in Pakistan cricket recently. 199 sixes in T20 cricket for Hafiz, and the way that he's playing, I think the next ball there might be a chance of his 206. That 6 also means that PCB are planting 10 more trees. You're being very fitness conscious. Shazir, what kind of tree would you like planted? Mango tree, maybe? Palm trees, Bazit. I like that Miami feel. Come on, इतना easy नहीं है यार, शाबाश. Come on, शाबाश. मेरे पास. Looks as if they're going to come back. Anwar Ali, the quickest fielder on show, but good running.
9 overs gone, it's 74 for 1. शाबाश 31 balls, 50 partnership. Hafiz 30 of 16. And he's looking like the danger man who's going to take the attack to the bowling. Zaman, well, he needs to up the ante. But right now, it's all about Mohammad Hafiz. I've finished my tea. But right now, the problem for Sindh is that it's a very potent batting lineup. You've got Iftikhar Ahmed, Shoaib Malik, even Zoaib Khan is quite a powerful hitter. But we've seen so many times in this tournament that the back 10 are the ones which really go for runs. Well, Fakhr Zaman has started the over by depositing Asghar into the stands. Start of the over, big 6 by Fakhr Zaman, sweetly off the middle. They're trying to bowl way behind the popping crease. Bazin and just Fakhr Zaman down the track, just picked it up, big 6. 10 more trees, Tuck and PCB are going to plant in Pakistan with this big hit. They're trying to maybe slow the pace up by bowling from behind the popping crease, but didn't matter. It's now Fakhr Zaman who's on the attack. Little paddle sweep, boundary. Showed that finesse over there. Mohammad Asghar, first 2 balls, 6 center 4. Fakhr playing a cool, calm, collected inning, but the captain Sir Faraz has other plans for Asghar now. He exactly knew where the fine leg fielder was. He knew he's trying to bowl it to its pads. He's going to bowl it a little bit fuller. All he had to do was just get down, watch the ball hit the bat, just race away to the boundary. Over the wicket now. Goes wide, smash, drill, down the ground, another boundary. A bullet over the bowler's head for another boundary for Fakhr Zaman. He's on a roll now. Bringing down the run rate from 10 to 9 now, Bazid. He tried to go wide of the crease, wide, but Fakhr Zaman reached it and hit it right over the bowler's head. 6-4-4, smashes it to the, oh, that's just a couple of runs. Bit of an anti-climax, but 50 for Fakhr. Smart innings by Fakhr Zaman. Had a good over, 50 off 32. Just look at that strike rate. 156 just on a roll. Fuller, single down the ground. But just look how calm he's playing. He got his boundaries this over, got a double last ball. Just nudged around for another single. KP's playing a smart run chase right here. They knew that they're going to stay calm at the crease. And it's an achievable target if they have wickets in hand. And having Shoaib Malik, Iftikhar down the order, of course, helps a lot. Side, come back for the second, 19 of the 10th over. It's 93 for 1.
93 for 1. At the same stage, Sindh were 93 for 3. They got 90 in the final 10. But the important part is that they only got 18 in the final 3. Shaheen Shah free, they had a lot to do with that. So quite a lot in the favor of KP at the moment. Anwar Ali got back into the attack. Fakhar Zaman looking leg side. Easy single there. Just right now, Sindh is looking a little bit flat. Just a wicket here, a few dot balls. It's easier, I mean, it's on Fakhar and Hafiz to bring this game home for KP. I mean, it's not easy for any new batsman to just walk out the dressing room and just start off right off the bat. These two batsmen are well and set with all the experience. They brought Anwar Ali into the attack to maybe change things up. Spinners trying everything they can, bowling wide of the crease, behind the crease, nothing in it for the spinners. Multan is such a beautiful shot, as you see, with the sun setting in Multan, Bazid. It's a beauty. Worked away to the leg side. But it just seems as if KP have this under control. Like that drone shot, very much under control. Crispy evening. Yeah, Monday evening, very busy if we pan down. Anyway, it's very busy in the ground as well. Prolonging the inning now, Bazid. But talking about those catches, you know, dropping a couple, especially in a crucial game like this, it really brings the team morale down in the fielding department. They know this is a must-win for Sindh, and they had an unfortunate loss yesterday. But dropping crucial catches at that time is kind of looking costly for them right now. Chipped over, extra cover, nicely placed. Hafiz gets the boundary. Fortune favors the brave, Bazid. I mean, that was not even off the middle. It was a wide Yorker by Anwar Ali. Got the bottom of Hafiz's bat, I feel, and just straight went over. Hafiz has just been playing bowl cricket. He just seeing the ball, hitting the ball, and just backing himself up for another boundary. 100 for 1. Goes down the ground. Has he got enough? Yes, he has. 206s in T20 cricket. He joins Malik, Afridi, Kamran Akmal in that list. Hafiz, who's been in magnificent form past couple of years, but that is a beautiful shot. In the slot, length ball in T20 cricket. 206 for Hafiz right there. But he's just dealing, it's a highlight reel. Hafiz's batting this whole tournament looks like a highlight reel. Just dealing in boundaries, 6s and 4s. It's a single to the leg side. Good over for KP, 107 for 1.
Every time you look at that, it's such a wonderful ground. It is. With the drone, it looks beautiful, but if you're on the ground as well, it's wonderful. And what has been wonderful has been Fakhar Zaman. See, just went from the start, hopping down the crease, hitting Mir Hamza over the top. All these shots, when he's in attack mode, he likes to use his feet, but a little cheeky finesse right there by Fakhar Zaman too, with that big six, with that sunset view. Beautifully played by Fakhar Zaman. Another big score this tournament. Shazar last over, previous over, we're talking about fielding lapses. And you play a lot with Sarfraz, you know him well. He does get very animated, gets annoyed. He was seething at the presentation as well when I asked him about the fielding unit. And today again it's the same, so what kind of reaction, or after the game, what kind of reaction will he have? In the cricket ground, inside the boundary rope, he's very intense. But he's one of those that celebrates with you the most when you do something well. He just expects a lot out of his fielders. What is in his control or the fielder's control, he expects the team to really do well with. So he just knows that he just likes to have this intensity onto the field, and he expects everyone to play with him. Back of length. It's 84 now, needed of just 45 deliveries. It looks pretty comfortable, but a couple of wickets, you know that T20 cricket, you can't really predict much, but with the way that the run chase is going, it looks as if it's quite comfortable, and KP look to have this under control. Running the one, runs hard right there. Another double from KP's side. Baz is just noticing the running between the wickets for KP and Sindh. If you could compare that, so many doubles were missed between the wickets because they were relying on their boundaries. But if you just notice, when there's not a boundary available, both these batsmen run their first one really hard, looking for that second. Yes, you look at these things throughout the tournament. You look at fielding lapses, you look at running between the wickets. T20 can be quite fickle in that way. You can do everything right and still lose the game, but most often the team that does these small things or doesn't commit many mistakes ends up on the right side. That's smashed down the ground. Will that reach the fence? Yes, it will. Another boundary. A desperate effort by Anwar Ali at the ropes, but another four by Fakhar Zaman. That boundary and over, they're just getting at ease. Great partnership, just building even more. They look like they're in cruise control, bringing this game home. This was like a low full toss, just hit over the top. Just like taking a calculated risk right there, Fakhar Zaman, knowing where Mir Hamza is about to bowl. Goes leg side. Doesn't find the timing this time. I feel like Fakhar Zaman is just toying with the bowlers right now, the way he's just going about his business. Still looking for a lucky breakthrough. Somewhere, maybe a small mistake made by the batsman might just put a little bit Sindh back into the game right now, but they really desperately need a wicket. Last ball of the over. Hopefully Mir Hamza can finish this over right. Square leg in the circle, maybe going over cover. He likes to go downtown as well. Goes leg side, and Hafiz ends the over with another classy maximum. He gets to his 50 in style. His fourth 50 in last 6 innings. Mohammad Hafiz is just getting better and better.
156 is off the tournament. 10 more trees added by PCB and Tuck. When 12 overs done, it's 121 for 1. ने 23 गेंदों में निस्फ सेंचुरी बनाई है। ये टूर्नामेंट की तेज़ तरीन निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर हुआ है। कल हारिस सोहेल ने भी इतनी गेंदों में 50 रन बनाए थे। इस वक्त सिंध के फील्डर्स को एहसास हो रहा होगा कि अगर वो 2 कैचेस नहीं गिराते तो अब तक सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। 2 चौके और 4 छक्के हफीज़ लगा चुके हैं। जब आप हफीज़ जैसे इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ देंगे फिर जाहिर है वो भुगतना पड़ेगा आपको उस सज़ा को। केपी का कैंप है जिसमें टीम मैनेजर फरूक जमान आपको नज़र आए थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर भी रहे। T20 एक ऐसा खेल है जिसमें सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं इम्पॉर्टेंट, फील्डिंग की भी उतनी ही अहमियत है। और अगर आपकी ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग दोनों ही ना अच्छी हो, स्ट्रगल कर रही हो जैसे कि आज सिंध की तरफ से देखने को मिला, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। लग ये रहा है कि हफीज़ को रोकने का कोई तरीका अभी तक बॉलर्स ने नहीं ढूंढ सके अभी तक। अपनी गलती से आउट हो तो हो, कोई जवाब नहीं है बॉलर्स के पास। यहाँ 51 गेंदों में 47 गेंदों में 62 रन की ज़रूरत है। सिंध की टीम मरीना यहाँ क्या कर सकती है इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए? सरफराज ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग में भी तब्दीलियाँ की हैं स्पिनर्स के बाद। अब वो दोनों एंड पर वापस पेस को लेकर आए हैं। सरफराज ने तो सारे जतन किए हैं अब तक, लेकिन पहले एहसान अली ने कैच गिरा दिया, उसके बाद असगर ने मिड ऑन पोजीशन पर कैच छोड़ दिया मोहम्मद हफीज़ का। ये वाइड गेंद बिल्कुल हक बेजानिब थे अंपायर। फ़खर जमान भी आप फॉर्म में आ गए हैं। हफीज़ पहले ही बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे। इफ्तिखार अहमद भी, शाहीन अफरीदी विकेटें ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ये टीम जो केपी है ये आगे चलकर नॉर्दर्न को चैलेंज करेगी। निस्फ सेंचुरी पहले देख लेते हैं। हफीज़ जो हैं उन्होंने स्पिनर्स का इंतज़ार किया, बाहर निकलकर शॉट खेले, कई ख़राब गेंदें भी मिली। ये हम देख रहे हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा इस सामने की जानिब ऊंचे शॉट खेलने लगे हैं। ये तो हमेशा से इनका फेवरेट शॉट रहा है, पुल शॉट। कई बार फ्रंट फुट पे भी खेल देते हैं। और फ़खर जमान ने सीधा खेल दिया हाथों में, स्क्वायर लेग पर खुर्रम मंजूर थे। तो बिल आखिर इस पार्टनरशिप का खात्मा हो गया जो कि इस मैच को अभी लेकर जारी थी सिंध के। दोनों एंड पर तेज़ बॉलर को जो बॉलिंग कराने का फैसला था वो सही साबित हुआ सरफराज अहमद का। अनवर अली ने विकेट ले ली। फ़खर जमान बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते थे बॉल को, लेकिन फील्डर के हाथ में फिनिश किया। थोड़ा सा टाइम नहीं कर सके, बैट ट्विस्ट हुआ और आखिरकार ये पार्टनरशिप टूटी सिंध की जानिब से। अनवर अली एक बार फिर कामयाब साबित हुए। फ़खर जमान ने खूबसूरत इनिंग्स खेली है 61 रन्स की, जो कि ज़रूरत थी केपी को भी और उन्हें पर्सनली। एक खतरा गया, दूसरा हाजिर है। इफ्तिखार अहमद, हम सब जानते हैं कि किस किस्म की हिटिंग वो कर सकते हैं और इस स्टेज पे जब हफीज़ सेट है केपी के लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित हो सकेंगे या नहीं, ये देखना होगा।
अब एक ही सूरत नज़र आती है ये हफीज़ के आउट होने के बाद कि देखिए ज़्यादा जो नेचुरल इनका एंगल होता है, ये लेफ्ट हैंडर को गेंद बाहर निकालते हैं, उसके खिलाफ खेलने चले गए थे फ़खर जमान, इसी पर ये कैच आउट हो गए। इस विकेट की अशद ज़रूरत थी, फ़खर जमान को इतनी ज़्यादा एलिवेशन नहीं मिली, ना ही फासला मिला, एक आसान सा कैच रहा खुर्रम के लिए। तो अब सिंध के लिए सही मानों में दरवाज़ा खुल सकता है अगर ये दूसरे सेट बैट्समैन को भी आउट कर लें, मोहम्मद हफीज़ को, क्योंकि जब दोनों तरफ नए बैट्समैन होंगे तो फिर इनके बॉलर्स के पास बराबर मौके होंगे, वहाँ पर गेंदें डॉट होंगी, दबाव बढ़ेगा। अच्छा स्ट्रेट ड्राइव करके एक रन बनाया और दूसरा रन भी हासिल कर लिया इफ्तिखार अहमद ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इफ्तिखार अहमद बड़ी शॉट्स भी मार सकते हैं लेकिन अलॉन्ग द ग्राउंड भी खेलते हैं। सिंध ने कदरे बेहतर बॉलिंग की है, काफ़ी हद तक कंटेन करके रखा था, लेकिन जो चांसेस उनको मिले वो शुरू में अवेल ना कर सके ख़राब फील्डिंग की वजह से। इफ्तिखार अहमद ने पहली गेंद पर 2 रन बनाए। अभी मज़हर अरशद बता रहे थे कि इनका जो स्ट्राइक रेट है टूर्नामेंट में वो 200 का है, इसको बरकरार रखा है अपने रिकॉर्ड को पहली गेंद से। ये आसान टारगेट नहीं है 184 का, जहाँ पर भी आपकी इनिंग्स में रास्ते में झोल आएगा वहीं दबाव वापस आ सकता है। यही T20 क्रिकेट की खूबसूरती भी है, इसमें मोड़ आते रहते हैं। बिल्कुल चेस करना कभी भी आसान नहीं होता T20 में, स्पेशली आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है, वो भी एक सर्टन रफ्तार के साथ, क्योंकि जो आस्किंग रेट होता है उस पर आपको नज़र रखनी पड़ती है। केपी फिलहाल अच्छा जा रहा है, हफीज़ मौजूद है। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अनवर अली की जानिब से, उनका तीसरा ओवर मुकम्मल हुआ 127 पर 2। ये दोनों विकेटें आज अनवर अली ने हासिल की, दोनों ओपनर्स की। साहबजादा फरहान को आना है, शुएब मलिक, ज़ुहैब खान, वहाब रियाज, ये 9वें नंबर तक बैटिंग जाती है खैबर पख्तूनख्वा की, इसलिए मुश्किलात हैं सिंध के लिए। ये आप देख सकते हैं कि दिन डूब रहा है मुल्तान शहर की इमारतों की चोटियों के ऊपर। बिल्कुल ये आखिरी झलक है इस 5 अक्टूबर 2020 के सूरज की। दाद देनी पड़ेगी कैमरामैन को, खूबसूरत मनाजिर थे आज दिखाए मुल्तान के इन्होंने। सामने जाओ, सामने। आप बात कर रहे थे हफीज़ ने जिस तरह सामने छक्के मारने की, अब ज़्यादा नज़र आते हैं सामने मारते। मेरा ख्याल है T20 के हिसाब से सबसे सेफेस्ट एरिया होता है। अगर आपको लेंथ मिल गई, आपकी जोन में बॉल है, एक तो कनेक्शन भी अच्छा होता है और सबसे सेफ एरिया है कि आप सामने टारगेट करें। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों सुई नॉर्दर्न गैस के लिए भी एक साथ खेलते हैं एक अरसे से, इफ्तिखार और हफीज़, इसलिए एक दूसरे के मुतालिक जानते हैं कौन कितना रिस्पॉन्ड करेगा। टूर्नामेंट में बहुत अच्छी पिचेस हमने देखी आज भी। कभी कभार हमने देखा है कि गेंद स्पिन बॉलर्स की जो गेंदें वो ग्रिप हुई हैं, लेकिन आउटराइट टर्न होते हुए हमने गेंदें नहीं देखी। रन्स की एक बौछार है। हालांकि मुल्तान की जो पिच थी इसका खासा होता था, गेंद रुक कर आती है, बाउंस मिलता था फास्ट बॉलर को, लेकिन वो बहुत
बहुत तेज नहीं गेंद निकलती थी, शॉट पे डिलीवरी भी। बाल बचे, इस बार गेंद तकरीबन उलझ कर रह गए थे। अच्छी बॉल थी, इफ्तिखार डाउन द विकेट थे, लकी रहे इस मौके पे। विकेट पुल किया खाली जगह पर, अच्छी फील्डिंग और थ्रो आई बॉलर के हाथ में। उनने फौरन ही बेल्स को डिसलॉज किया। ऐसा लगता है हसन खान के अंदाज से जैसे पहुंच गए थे मोहम्मद हफीज। 2 की कॉल थी, खेलते साथ ही अच्छी फील्डिंग बाउंड्री पे। अब देखना होगा कि क्या इस मौके पे सिंध एक और विकेट हासिल कर पाएगा, लेकिन रीप्ले के हिसाब से लग रहा है दानिश अजीज से डायरेक्ट थ्रो की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा मुश्किल होता है अगर आप डीप में हों, वहाँ से डायरेक्ट थ्रो करना। अच्छी दौड़ भी लगाई हफीज़ ने, पहला रन तेज़ी के साथ बनाया था, इसलिए अंपायर को भी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। ये फैसला सुनाने में नॉट आउट करार दिया गया। आज वैसे भी हफीज़ का दिन लगता है। ये दानिश अजीज़ हैं जिन्होंने थ्रो फेंकी थी। 133 पर 2। ये सिंध की टीम जिन्होंने आज पहले बैटिंग की, 183 रन बनाए 7 विकेट पर। शर्जील ने एक और बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली, 90 रन की। पिछले मैच में 74 रन बनाए थे। एहसान अली ने 42 रन बनाए सिर्फ 32 गेंदों में, लेकिन बड़ा अच्छा जवाब मिला है अब तक केपी की जानिब से। मोहम्मद हफीज़ अपनी फॉर्म दिखा रहे हैं। उनकी खासियत ये है, उनकी कामयाबी का राज उनकी टाइमिंग रही है और प्लेसमेंट। इस बार भी यही देखने में आया। जिस अथॉरिटी से खेल रहे हैं हफीज, ये शॉट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। परफेक्ट प्लेसमेंट थी और स्पेशली टाइमिंग की बात करें, कोई चांस नहीं था फील्डर के पास। बॉल बुरा नहीं था, लेकिन इस वक्त हफीज के बल्ले से रन ही निकल रहे हैं। काफ़ी देर से विकेट पर मौजूद हैं और ये 59 रन बनाते हुए उन्होंने सिर्फ 4 गेंदें डॉट खेली हैं। इससे हम इनकी बालादस्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं पिच पर हफीज़ की हुक्मरानी का। जब ये 33 गेंदें खेल लेते हैं मोहम्मद हफीज़, 33 से 35 गेंदें हैं, मोहम्मद हफीज़ जब 35 गेंदें खेल लें T20 मैच में, तो इनकी टीम की जीत का तनासुब 80% हो जाता है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है, 80% इम्कानात हैं। आज हालांकि अभी तक 35 गेंदें नहीं खेली हैं। 35 गेंदें नहीं खेली, लेकिन 60 रन जो बना